this going? This one. अच्छा बाय नाउ कर लेंगे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल आ रहे हैं चलो अल्लाह खैर करे कोई गल नहीं all right PPI base is up, pressure is up. Strike price 620. All right, let's look at night low, night highs. Means, okay, 21,927. 21,753. Okay. Areas are updated across everything. Evening areas was 22,000. So night high 21,927. $21,927 is NQ night session high. 21,753 night session low. Let me write it this way. Night session low, night session high. So that's for NQ. All right. Let's see. Connection. ES is 60. ES 609025 high, 605350 low. Where is it right now? It's at 6080, so very close to upper range. All right, so let's do value area top, value area bottom. Value area, let's pull it up from 60-minute chart.
So what are we looking at? Yes. So R1, right in between. So, okay. Let it refresh. And then I'll start my commentary. Okay, let's see. Good morning, Rajan. क्या हाल चाल है? No problem, sir. Market की मोहब्बत है, मेरी क्या मोहब्बत? All right, let's get started. Let's see Bullnox, Apex, Perdia, everything else. Value area, we have the top of 6077 is the top, and the bottom is 6038. 6038 to 6077. 6038. So now we have the night high, NSH, NS low, night session low, right? So let us get our ammunition in line and let's get started shortly with this. I'm gonna turn the TV on. At least I have some company. That's good. आपकी गाड़ी अंदर आ गई उधर? Yes. 4x4 है? जी 4x4. फिर ठीक है. फिर तो इनकी गिरता नहीं. So let me do all the flow bots that are pending. Flow bots first. I'll do the flow bots and then I just gotta fix these up. Flow bot, flow bot, flow bot. Okay, I gotta do these flow bot activations.
मैं जाने ना इन्हें दी गड्डी छोटी है तो हाँ हाँ मैं कहना 1 मिनट लग जाए नहीं वो प्रॉब्लम है कि अगर मार्केट खुल गई ना वो फिर कोई गल नहीं 1 मिनट मैं पर्ची लगा के आया हूं और नहीं मैं गड्डी लेके आऊंगा ना कोई गल ना लिए ना 5 मिनट लग जाएंगे इनकी गाड़ी छोटी है नहीं फंस जाएगी ज्यादा मसला पाया जा रहा है छोटी
Good morning. कैसे हो? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं सोचा ये सब फील नहीं था, आप ऑफिस नहीं खोलेंगे, इसलिए मैं बाहर बैठा था, मतलब मैसेज करता हूँ मैं। 7:15 का यहाँ पे बैठा हूँ, मेरी गाड़ी वो तो खड़ी की। अच्छा, ओ मैं देख रहा था गाड़ी नहीं है तो। अच्छा, That's a long time. That was fast. हो गया सर। और जादरों की फर्क पैदा है। डीजल है 4x4। अच्छा। It just आ जाए सर, आज जिधर मर्जी बैठे जी, पूरा फ्लोर आप लोगों का। आज तो ज्यादा लोग आएंगे नहीं लगता। और नहीं सर, गाड़ियां फंसी हुई हैं रोडों में। ये नहीं, ये पूरा क्लीन ही नहीं है ना, अपना एरिया क्लीन नहीं है। ओए होए, मैं तो हाईवे से नहीं आया, क्योंकि हाईवे जो है ना, नहीं मैं आया हूँ एयरपोर्ट रोड सीधी। लेकिन मुझे ना स्मॉल स्ट्रीट में कोई गाड़ी नहीं होती, सिर्फ ट्रक ही जा रहा होता है। ट्रैफिक नहीं थी आज ट्रैफिक थी। वो कंट्री साइड में मुझे तंग हुआ, ऊपर ऑल द वे जितना हाईवे 10, वो तो ओल्ड चर्च, वो सारी चीजें वो बंद थी। एनीवे, उनकी गाड़ी लानी थी तो So let's do this. All right. Good morning, everybody. Thursday, February 13, 9:06 a.m. Sorry, I had to go pick up the car, so out of breath, climbing the stairs. Don't have much audience in public. I mean, on the floor, but today, quite a bit of snowstorm, but it's normal from Toronto. So good morning, good afternoon, good evening. Welcome to superareas.com daily stream, where we bring you the market updates for at least 10 markets, 15 markets every day. Let's look at what is happening. So good morning, good afternoon, good evening, wherever you guys are joining us at superareas.com, where we have developed an algo for futures market that predicts how high a market can go, how low the market can go, and how can we scalp along the way. So let's take a look at the market for Nasdaq. Nasdaq high has been 21,927. The low has been 21,923. 174 points. PPI, Forex Factory, there's absolutely no news. No, there was major news. It was margins were increased, but the movement I saw at 8:30 while parked didn't really move. So unemployment claims are within the range. So it's lower than the previous, higher, lower than the forecast. So I saw the market shoot up maybe 10 points, nothing major. Again, Mr. Trump is going to speak today, tentative. I don't know when, so we'll see how it goes. PPI month over month is green. High to go low is what my call is, meaning to will sell every time there is a resistance. Now let's look at ES. Where is ES right now? ES, I've posted the value areas. The value areas for ES for yesterday are 77, and the low of the value area is 38. So that's where the majority of the users traded last night. Yesterday's volume is from 77. Now 77 is strong, very strong, because 60-minute mid-band is standing there, value area top is standing there. So let's see what is the initiating activity looks like when the market opens in about 26 or 22 minutes. Officially, market is open, of course, but Nasdaq, we are going to be looking at what is the night high and low for ES. Night high, it went as high as 90, and it went as low as 53. So, and then we'll just look at Daniel's brief, what the strategies are for today, and we'll go from there. Let me bridge Daniel's mic shortly. He's here. He was here at 7 o'clock. He's got the 4x4. So, you know what they say, rain or shine, we're going to be here, right? If we can make it here, we'll be here. So, but that's the exciting part. Live stream majority. Let me check my cameras. Cam 1, personal cam is good. Board cam is good. Screen share cam is good. And today, the classroom, we just have two great gentlemen here who managed to
beat the snow and get here, right? So kudos to you. That's amazing. That shows dedication. That shows the passion. That shows learning. You could have done this from anywhere in the world, but you chose to be in person. So that's fine. My live stream is all good. Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, Instagram, and RTMP. That's good. TikTok is good. Zoom is good. So let's see. Of course, always green to go up, red to go down. No change in that. And let's see. So I thought I would have the same energy as yesterday because of CPI. Our numbers were moving very fast on Nasdaq, but looks like maybe Canadian storm has a bit of an effect on your market of Nasdaq, but we'll see. So Nasdaq pivots. Are we up to the latest areas? Let me refresh the areas. Areas are refreshed for me for ES and Nasdaq. They've been all uploaded for everybody else. Reload, reload, reload. Good. Rescript. Perfect. I just had to fix somebody's flow bot. All right. What are we looking at? N flow bot. B6. That is done. Your maximum other quantity has been met. हाँ, इसका मतलब कि आपने अपना ज्यादा कर लिया ना थोड़ा. कितने लॉट्स डाल रहे हैं? There you go. Somebody made $350 from ES areas last night. Congratulations. Congrats. That's awesome. I don't know if it got hit. I didn't watch the last night's area, but this is great. What was the last night areas? Evening areas we gave you from 61.20 to 61.30. Did the price go there? Did it go there? That's the question. Yeah, maybe you took the morning areas and worked on there. So maybe 61. No audio on Zoom. 6160. नहीं फिर उन्होंने वैल्यू एरिया लिया जो चल रहे थे ना. All right, Zoom is fixed now. Zoom audio is good. I think you took the value area. Yeah, 6089. Yes, you took the VAT top. Congrats. So the value area was active, so that is good. My Zoom is good. Can't hear you. Okay, sorry. Everything got pushed to. Let me quickly repeat for those that were on Zoom that what did you guys miss? All I said was Forex Factory, PPI didn't cause a big effect. Unemployment didn't cause a big effect. No, audio is okay, yes. Night high for Nasdaq is 927. Night low is 753, so 174 point swing. We are looking at ES. ES night high has been 6090, night low 6053. And of course, value area top is 77 to 38. That's your value area for ES. Now, 77 is going to be very strong
because it has the value area top as well as mid band of 60 minutes. So 77, keep an eye on 77. And of course, 6038. These are going to be important numbers. What else for ES? ES, let me quickly go in and scan ES. High to go low. I still think high to go low is good in terms of our plan for today. We'll see how it goes. Right now, it's acting as a support, but initiating activity of value area. If it gets inside, it will go fill up and go all the way down to 38. So high to go low, because right now it's opening above the value area. If you guys watch and remember the video of value area, responsive activity will try to penetrate as a resistance, as a support, and let's see. So this current candle all the way up to went to 6087 one more time. ES को बताइए ना आपने Value area 77 or 38? ये जो area हाँ 5977 extremely expected low है आपका 601 हम बिल्कुल सही पढ़े हैं, बिल्कुल सही. हाँ, तो हमने कहा पे हाई टू गो लो लेना है, हाई टू गो लो. यस, ऊपर से नीचे. So watch the 60-minute chart. That will give you a good and clear understanding, the mid-band of 60 minutes. And that's where I'm pulling the figures. I'm not putting it out of thin air, just that I'm not any expert or this or that. This is all done by the software. I'm just repeating what I see. Doesn't make me any smarter just because I sit here and I can read a chart. Smart people are the ones with discipline. Nothing to do with charts, nothing to do with indicators, nothing to do with how much capital. Only smart person I respect is the guy who has a discipline. Forget everything else. All right, so let's see. We sit and wait. It's going to be a slow day, but we got 9:16. मैंने कहा ES पे हाँ जी. 6130 पे सेल 6130 बहुत दूर है. अभी उससे पहले 2 स्टेप्स हैं. R1 होना है, R2 होना है, फिर जाके अगर लगाना है तो 6123 पे लगाएं, या इवन 21 भी सही है, लेकिन वो एक्सपेक्टेड हाई तो अभी देखते हैं कहाँ पहुंचती है. पहले तो R1 पे जानी है. R1 बीच में है, R2 है, अभी तो बहुत दूर है आपके लिए. हाँ, ये आप करंट कैंडल है भाईजान, करंट टाइम ये है. आप तो 3 दिन पहले का देख रहे हैं. ये देखें टाइम, आप 3 दिन पे करंट कैंडल तो ये है. बिल्कुल गलत पढ़ रहे हैं चार्ट. आप तो 4 दिन पहले का चार्ट देख रहे हैं. करंट प्राइस ये है जो बिल्कुल क्या टाइम है नीचे चल रहा. ये कैंडल कब की है? रेड वाली है वो करंट. आप तो 4 दिन पहले की कैंडल पे करंट लाइव देखिए. No, 1510 mid-band, it's coming from lower high, but always they say green to go up. You can take every mid-band, but this mid-band candle is already done, by the way. We came from higher high, touched the mid-band twice and went back up. So first time it did that in the morning, 8:49, coming from higher high. Second time it came from around 9:09. That mid-band is done. So wait for if it's higher high, then it has a better chance. Because right now both are bullish, everything is good. Let's see which way market pushes up. And I'm surprised they took all the market back up. Like first it went down from 6098 all the way to 6020, 77-point swing yesterday, and then 70 points, and 90% has been recovered. So high to go low is what my plans are. And we'll hear Daniel's brief, of course, for everything else. And the areas, guys, please stick to the areas, and short areas are better.
टेक प्रॉफिट में कमीशन कितना है सर कौन सा? छोटा ही है, Yes. $3 है, 3 या? ESG इतना है, अच्छा मैक्सिमम $5 होगा। हाँ मेरा वो लोगों ने तो डबल चार्ज किया सर। ओके, या आ गया जो लगता क्लीनिंग है। Yeah, gap is too small, so go for R2. Go for R2. It is so small because magic bands are sitting there. But ES का गैप जो है ना, ES और Nasdaq दोनों में R1 और R2 में गैप थोड़ा छोटा है। R2 पे लगा सकते हैं। पहले तो अभी देखे ना, अभी तो R1 पे पहुंचना है, R1 पे डिसाइड करेंगे क्या है। So lots of things. हाँ जी, निकाल लेंगे। हाँ, तो आप पहला ऑर्डर लगाएंगे। टेक्निकली अगर आपने जरा सेफ खेलना है 6111 R2 पे, ये यहाँ से 83 से सिर्फ 13 पॉइंट है और आगे सिर्फ 26 पॉइंट के बाद R2 स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आ रहा है। ट्रू स्ट्रॉन्ग तो हाई टू गो लो है, एक्सपेक्टेड हाई, बट लेट्स सी। पहले तो इसने वैल्यू एरिया के अंदर घुसना है ना, तो लेट्स सी। इसने कल वैल्यू एरिया बहुत लेट जाके फिल किया कल का वाला, तो आज का देखें वैल्यू एरिया 77 से 83 तक है, तो गया अंदर, वहीं से मुड़ आया, तो स्टिल हाई टू गो। तो इनिशिएशन एक्टिविटी तो हो क्या, अब रिस्पॉन्सिव एक्टिविटी देखनी है कि क्या होगी। हाँ ठीक है, एटीएम इससे पहले लगानी चाहिए? नहीं उसके साथ, मतलब एटीएम लगा के ऑर्डर लगाएंगे, लेकिन आप फिर 3 जगह पे एटीएम नहीं लगा सकते कि मैंने ये भी, वहां पर आप सिंगल सिंगल लगाएंगे। नहीं, वो होता है रात के लिए। अगर आपने एक ऑर्डर लगाए यहाँ पर 6111, क्योंकि आप सामने बैठे हैं ना, तो आप उस वक्त देखिएगा कि मैंने मेंटली कब क्लोज करना है, या प्रॉफिट में या लॉस में। तो अगर आप एरिया लगाते हैं 6111, लेट्स सी, 6119 मैजिक बैंड का निचला है, या तो आप उसको एग्जिट कर दें 15 पे, 15 तक आए तो आई एम लाइक गेटिंग आउट। लेकिन ये मैं आपके साथ ही हूँ, वहां देखा जाएगा उस वक्त जब टाइम आएगा। क्या, मैंने भी तो ट्रेड लेना ही है, लेकिन इन एडवांस आपको ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नंबर बता दिए गए कि आज मार्केट ये कुछ कर सकती है। तो पहला है 611, नहीं पहले तो R1 है ना, पहले तो R1 है, R1 के बाद फिर देखेंगे। हमेशा जितना हाई जाएंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा ना, हाई टू गो लो। अब आप कहें कि मैंने लेना है 6123 फॉर एग्जांपल, मेरे लिए यहां मैं एंटर करूंगा, वाई आप कहेंगे 6123, वाई इज दिस नंबर हैज ए वैल्यू, राइट। 6123 आपके लास्ट वीक का हाई है, सबसे हाई जो लास्ट वीक था ना, उसका हाई 6123 है। सो the private streams are gonna go on with the audio. I mean, the public streams I'm gonna turn off as soon as Daniel starts speaking. So just to let you guys know. Last week एक blue line जा रही है 60 मिनट पे, तो वो बताता है yeah 6123. So all these numbers work as support and resistance. So you pick however you want to get. मैं तो अपने किन्नुल साथ लेके आया हूँ मार्ट के भाई। हाँ नहीं ये नहीं है, शायद कुछ मिक्स हो, आई डोंट नो, लेकिन ब्लैक सॉल्ट लेके आए हैं, आज रिलैक्स करेंगे। डाइवर्जेंस ऑन 3020, गैप ट्रेड बना था 3020 में, अब ये हायर हाई से आ रही है, लेट्स सी। Will never ever ever sell against the color.
So right now it's green, so night session is still kind of valid. Let me check my Bluetooth so we have an idea, so you guys can hear. मैं तो बाद में करूँगा, मैं इंटरव्यू के बाद बात करूँगा। पास करना है ना। Yeah. Go slow, go slow. आराम से करना। Margins are restored, everything is good. Okay. कल मेरा 250 चार्ज किया वो लोगों ने। आप उनको चैट कर लेना ये टे हाँ बता दे उनसे कहें कि why would you guys charge me double? Yeah. मैंने शाम को देखा जब Maybe अभी 2-3 दिन बाद वो शायद वो ना हो, उसे कहते हैं प्री ऑथराइजेशन ना हो, तो 2-3 बाद अगर ना क्लियर हुआ तो रात में आपको बता दूं एरियाज के चार्ट बनाए सर और मिस्टेक मैंने ये कर दी जब भी आपको मैंने बताया तो मैंने करंट कंडीशन देखी प्रीवियस का एक ऊपर जाके मैंने आगे लगाया अभी देखिए ये फिर मैं आज आपके पास आके बैठा कि मैं देखूं कि मैंने गलती कर दी वो तो पीछे के भी दिखा रहा है ना। Alright. Good morning, guys. Good morning, guys. Assalamu alaikum. Namaskar. Hello, guys. Check. If you can hear me, guys, microphone check. Ji, good morning. Taimur bhai, walaikum salam. Harleen, good morning. Vikas. Joy Saab, good morning. Hikesh, Manish, good morning. Junaid bhai, walaikum salam. Abbas bhai, good morning. Walaikum salam. Shaji, Clifford ji, good morning. Saurabh, Vikram ji, good morning. Ranjit ji, Sameer bhai, good morning. Sayyid Ali ji, Jagdeep ji, good morning. Manpreet ji, good morning. Parag, Hikesh, good morning. Thank you, Hikesh, thank you. Manpreet Singh ji, good morning. Sunil ji, good morning. Aman, everybody, good morning ji. Quick review of our disclaimer, guys. All material and posting on our web service or our training floor not intended as trading advice. They're just meant to enhance your trading decision, but not make it for you. And we take no responsibility for any profit or loss. You're solely responsible for all your actions. And don't think you made money yesterday. You'll make it today. Always be on your toes. Always place your stops and always ready to accept those losses and do what you see. Don't do what you think and trade this market the very first day you trade. And all the areas we have on our graphs or in our superareas.com or not buy and sell offer or buy and sell areas or any type of financial advice. These are just for information and educational purposes only, and we take no responsibility for any action taken by any subscriber. Today, our base is up, pressure is up. High to go low would be a good strategy. High to go low would be a good strategy. Our expected high for S&P 500 is 61.21 to 30, but hit and run from 61 to 03, then 11 to 14, 61, 11 to 14.
couple of points, 5 to 6 points push to the down, but bigger push we are expecting from either R2 or expected high for the day, 61.21 to 30, and our expected low for S&P 500 is 60.23 to 60.13. Nasdaq very nicely pushed back up from our S1 area. Our expected high for the day is 22,100 to 22,140. PPI green to go up, and then after hours we'll see push to the downside. But the best is high to go low would be a good strategy. Our low for Nasdaq is 580 to 530, 580 to 530. The big hit to the downside is on crude oil. Trump phone conversation with Putin yesterday, and that's why we see crude oil just tanked. Very strong push to the downside on our crude oil, and it covers up. If you look at the previous push that we had to the downside, we had a very strong push to the downside, and it covered up almost 90% of that push yesterday. 90% push to the upside. All markets covers up very nicely, and Nasdaq as well. If you look at the Nasdaq, went up 122% of the previous push. If you compare the swing, Nasdaq break our high. S&P did not. Russell just very close, 77%, and the Dow also reached very close to the push to the downside, but not much movement. If I compare S&P 500 push to the upside, it's not giving us much push to the upside. And basis up, first go up and then from high to go low would be a good strategy, best strategy today. Then British pound went up, very strong push to the upside on British pound, went to $25.17, and right now retracing back down and just slightly above value area and above PP. Canadian dollar in value area above PP, and Canadian dollar gets strong. It gets a little push to the upside. Euro same as British pound, not much movement, but sitting below PP right now and in value area. Crude oil drop from yesterday's swing high, $3.46, and that's a big push to the downside on crude oil. And Trump and Putin are up to something, and that's why we see this crude oil very strong push to the downside, and went down to $70.22. $70.22. That's a big push to the downside from our high of 73.68, and it went down nicely. FDAX is continuously going up. If you see today, hit our expected high for the day while we were sitting here, and it hit our expected high for the day, and very nicely creates a diversion to the downside. Gold is up, gold above value area, above PP, above green midband. It went up yesterday, exactly hit our expected high for the day, 29, 45, 43, 46, 47, 50.3, and retraced back $17 in just few hours. Imagine $17 was, we hardly see a gold push, and now it's like an amazing push to the downside. It went down $88, push to the downside, went up $63, and right now retracement 27.6%, 27.6% push to the downside from this morning, 1 o'clock. After 1 o'clock, it started coming down. Copper went up 17 cents. That's a big push to the upside on copper. And right now, above value area, above PP, creates a diversion. And right now, just sitting at top of the value area. Silver, just 1.5 hours, it was above value area and above PP, and it came down 52 cents from this morning, swing high from after 4 o'clock, 4 a.m. It came down, and right now just it's hovering above and below PP, not giving us a much direction.
Natural gas went up, and we know why natural gas is going up, because of this storm, and very brutal storm. Even this morning, I had to park my car somewhere else and walk, and thanks to Rafi Bhai, he helped me out, and we brought back our car. And then we have Bitcoin is down below PP, and right now we have $2,725 push to the downside from yesterday. After 10 o'clock, it started coming down. Ethereum is down, and Bitcoin is down today, and Ethereum same as Bitcoin, $1.62, so $162.50 push to the downside, and it went up yesterday, and this is a retracement of $245.50, almost 66% push to the downside on our Ethereum. Keep eye on guys, our R1 area will act as very strong. Look at the Nasdaq, how strong push to the upside. So base is up, pressure is up, and that's why it's climbing up towards our R1 area. So the best is somewhere 2200, any place close to 980 to 2200 would be a very nice 20-30 points push, even further a strong push to the downside from that area. Why? Because our magic band top tip is sitting at 2200 area, so that will act as very strong resistance. Yesterday it breaks, if you see 3 o'clock, it breaks center of gravity of magic band, and then pause, test green mid band, and went up, and now it's trying to go up and test our top of the magic band. And remember, our magic band act as very, very strong resistance and support. So overall, guys, again, high to go low, first go up and then go down. Best is from high to go low would be a good strategy. Please, guys, take the areas. If you have any question, you can call me or you can text me. I will be here again. Assalamualaikum Daniel Bhai, short-term opinion on gold, please. Walaikum salam. Gold, sir, is up, high to go low. Short-term, high to go low. Thank you. You're welcome. All right. So first mid-band was done. Like जो आया था ऊपर से आपको 250 का ट्रेड दे गया. तो पहला मिड-बैंड हायर हाई से जो आ रहा था 930 के बाद आपका ट्रेड टेक्निकली डन हो गया. ये ना कहिएगा कि अब ट्रेड नहीं डन हुआ सर. डाइवर्जेंस है. ब्यूटीफुल ट्रेड हुआ 30 अभी, लेकिन उसको डाइवर्जन को कंफर्म हो लेने दें. थर्टी 20 पे डाइवर्जेंस है, बड़ी ऊपर लाइन भी आ गई है. $60 मिनट पे भी डाइवर्जेंस बनी है क्योंकि प्राइस आ गई है. Hello. Good morning जी. सॉरी सर, अभी
15 मिनट में सब साफ हुआ इसमें क्या और जी ज्यादा तो नहीं मसला हुआ अंदर ड्राइव अच्छा मैं तो भाई ट्रक है सॉरी ट्रक लेके हाँ बिल्कुल अच्छा किया। मैं क्या तुम दो तुम के रखो नाजदा क्या अंदर गाड़ी नहीं आ सकती। नहीं पता नहीं कैसे लाए हैं एक मत करो लो यार पार्क में दिक्कत हो रही है S1 से बड़ा ब्यूटीफुल पुश बैक अप फ्रॉम द एरिया S1 पे आ गई थी। हाँ डन हो गया सर अभी वहां से गिरी है 60 नाइट सेशन से गिरी है I took a mid band right here right now so let's see if my एक ले गई जी मिड बैंड मेरा खत्म हो गया जी ट्रेड मिड बैंड से भी भाई साहब now I'm trailing from this mid band trailing सर 6 मैंने 76 पे नहीं 50 तरह थोड़ा ऊपर है मैंने 76 पे लगाया था so let's see high to go low is the strategy congratulations ji Vikram ji done for the day 2 mid bands and done so the second mid band worked अब आपको पिक हो गया होगा हुआ है अब आपको दे रही है $50 तक तो ये ले लिया ठीक है नो प्रॉब्लम एक दिन में नहीं आएगा ना 50 दिन बाद आएगा 3 माह आप एरियाज करते रहेंगे ब्लाइंडली फिर आएगा एक दिन में एरियाज पे आएगा ना प्राइस आएगी तो लगाएंगे मैं अभी बैठा हूँ मैं नैस्डैक पे पता कहाँ बैठा हुआ था 980 पे नहीं आई चलेगी क्या करें वो 951 से ही चलेगी ईएस में बैठा हुआ था सारों में बैठा हुआ था पहले तो 61 पे बैठा हुआ था नहीं आई तो नहीं आई क्या करें अब मैंने ये मिड बैंड ले लिया ना और वो डाइवर्जेंस वाला ट्रेड ले लिया जैसे ही 30-20 पे कैंडल बनी आई एंटर डन फॉर द डे एंड स्टे इन शॉर्ट सर 100 बने थे मैंने ठीक नो प्रॉब्लम जो आपको इजी लगे अब अगला ट्रेड नहीं लेना अगर 50 ले लिए दोबारा नहीं एंटर होना Okay, no problem. No, we took exactly the price. No, we don't do trailing on MNQ. It's too volatile because you have to keep behind at least 25 ticks or 30 ticks. So it's very, very fast. Trailing doesn't work on MNQ. You just get out with an ATM. So yes, so we go normally with a couple of $100 a day. So that's fine. But go with aggressive because your account is still valid. It is valid. So yesterday they actually gave Log into TradeAway and tell me the balance right now. Your drawdown. So for Nasdaq, you pick a number. Where do you want to enter? Right now, it's testing the 30-20 mid-band. Let's see. Price touched beautiful S1 and then came down. Broke it. Okay, that mid-band failed for yes. No, don't worry about the dashboard. Dashboard, TradeAway. You gotta log into TradeAway. Give me any desk and I will log in. TradeAway. All right, Nasdaq shot back up to, let's see. No problem. Just give me 2 minutes.
Okay. Any desk, please? 1866-723-14. Give me 1 second. Sorry, one more time. 1866. Yeah. 723. Yeah, accept, please. 14. There you go. Nasdaq just shot back up. So we're gonna log into Tradeovate and not through Apex, through Legends. Because Apex is the most difficult exam there is. Okay. You only have one Legends? Okay. One I blew it, so I just have. Okay, no problem. The one you were is no longer is there. You have to make sure you delete it. Otherwise, they'll. Just cancel the subscription. Yeah, sound is coming on the premium stream. Don't take S1 for Nasdaq. Stay in short. Try to go low. So you have, let's see. All right, just you have a threshold. This one account is daily loss limit. Both of them are 25,000. Are they? One was 25 and the second one was 50. Okay. Even though you made the money, you still have now ability to only lose $2,000. They didn't give you any extra drawdown. Okay. So, but now you're how much? Do I have to leave? But here's the you have to make. You made $10,220. Okay, 10,220 divided by 30%. So you have to make now 34. So $24,000 more to pass Okay. in those 7 days. 7 days or 30 days, minimum 7, but Okay. that's Yeah, what. that's fine. Yeah, So 24,000. 24. It's not possible with only $2,000 available. It's practically not possible. Not possible. Okay, I can just. Absolutely. and go. Remember, this mid-band wasn't coming from higher high, so we're not touching it. So I set up an Apex too, so I don't know if you. Yeah, you have. Is your Apex connected? yeah. Did the team connected it for you? I actually figured it out. Okay, that's fine. So you signed the agreements, right, and Yes, I everything. Everything is good. Apex is. Let's do this. So disconnect this simulation. So don't connect to simulation. Yeah. Always connect to one of these. Okay. There you go. I've logged out. All right. No area yet. Still trying to. Work with this then. Yeah, absolutely, absolutely. नहीं सर ऊपर हायर हाई से नहीं आ रही प्राइस लोअर हाई से आई है तो ये मिड में हाँ वो देखें वो वैल्यू एरिया
वो एक दफा फिर वैल्यू एरिया के अंदर जाने गई, फिर वहां से बाउंस कर दे। हम्म। लेकिन हाई टू गो लो, so R2 what we are watching. My PAs, I don't have any trade yet, just waiting for some area to come to. Actually, I did take EAs, some trade on previous midband. So what are you guys doing right now? Nothing, just waiting. Okay. Absolutely waiting, because the plan is Mhm. to work, let the price go to R1 first, R2, that's the plan. Okay. Or if it becomes green, then I will buy towards it. But right now, one chart is bearish, one is bullish, so absolutely nothing. You don't do anything. No, no, no. You mostly do Nasdaq? No, no, Nasdaq areas, ES midband, oil areas and value areas, So and Nasdaq you use area for- 100%. Okay. 100%. See, right now for Nasdaq, I'm waiting for the price to get anywhere like 22,000. That's my target. There's a lot more movement in Nasdaq. Oh yeah, but you can really, you No, I'm know, not gonna touch it. I was just- it is. Those movement is okay, but it can be pretty expensive. Yeah. Nasdaq made one full doji, meaning empty candle. Yeah, midband 20 tick TPSL for midbands. You gotta do maybe from higher high minus 8.5 or 9 points, and lower low minus 8.5 to 9 points. That's reasonable. Let's see which way Nasdaq wants to go, up or down, up or down. They'll decide the future of. 10 o'clock candle is going to open in about 7 minutes. Oh. $60 is a divergence. Price made on a Nasdaq. Price made higher high, but your BBs did not. All right, Nasdaq wants to push up now.
in simple words, for APAC, I just need to make that $3,000. Correct, correct. And then they'll let me advance to the next stage. But that 3,000 could be in a day. Doesn't matter. Yes, exactly. What is it? Let's see. So you would still wait, right? Oh, I'm waiting. I'm not in any trade rush or any trade. ठीक है, good. Oh, 6081. Yep. Nasdaq is pushing one more time. You have to recover either from the area or the other. If mid-band hit a stop loss, it hit a stop loss, right? I'm not sure which mid-band did you take. Bouncing from the area. R1 is okay. Still R1 is not touched yet. It's R1 is okay. R2 is far. So yes, it's pushing up. New candle just open.
That's a small volatility. 2 points, 3 points, 4, please. If you can trail a mid-band trail, one mid-band at 909 worked. Then earlier, so far only 2 mid-bands. So I took the first one, and then I took every mid-band worked, and nothing failed here. Only one I didn't take was it was coming from a lower high. That I didn't take yet. Where's Nasdaq? Next candle shoots up or down. Yes, 1510 mid-band. And but that mid-band, it wasn't even 30-20 mid-band, had a divergent lines. Why you can't take that. 30-20 divergence is very powerful. At 938, 30-20 mid-band had a white line on top. So इस पर जो है वो ES पे 6088.75 minus sorry, 8.5 sorry. जो ES पे चल रहा है इस वक्त No. आया है that is 6088.75 Yes. minus 8.5 Yeah. यहाँ आपका stop loss होगा. All right, be ready. One more time, Nasdaq 22,000. It's nice that always move like this. 100%. It's not fast enough today. Mhm. It's unfortunate. Still waiting for Mary. 6103. Let me check. Yeah, R1 is okay. I don't see any problem. Just Nasdaq is kind of testing our patience. Yeah, आपका stop loss hit हो गया. Yep.
अब 9 दे के ना चली जाए. नहीं, अच्छा, मेरे ख्याल आज तो स्नो की वजह से जो है ना कहा था कि आज का वादा किया था Yeah, 30-20 mid-band worked kind of, but let's see. No. Nasdaq again too close. In 15-10 med bonds. I took that mid-band in 15-10. Yeah, even though it came from a higher low, I still took it. Yeah, positive. Even though I took one extra risk because it was coming from higher low, I'm like, I'm going in. Because it's supposed, you have to take it from a lower low. So direction is still confused between both and Nasdaq. There's no trend being established which way it wants to go. It went as high as 961. So 21,961. 21,000, it went as low as
21 enter. Do I call 980 done? I don't know. Don't just do it. Is it? अच्छा आज उठाओ ना सर घर के बाहर इतनी स्नो और वो भी जैसे उसने मेरे ख्याल से ब्रेक शो पर प्रेस नहीं किया और सख्त हो उसने किया होगा स्टेशन कहाँ बता रहे थे तो वो था मजे की बात ऐसी अपना वही तो करेंगे उससे दोस्ती करो। गोरे नहीं करेंगे कभी आप भी उससे दोस्ती करो। हाँ जी मुझे ये लगता है कि आजकल मुझे मिलेगा तो मैं कहूँगा भाई आज मैं कुछ खाना खिलाता हूँ गोरे ऊपर से हेल्प करते हैं मैं कैसी में था तो मेरे पास वो ग्लोवर नहीं आके तुरंत वो लोगों को हेल्प करते हैं बहुत स्नो हुआ नेपर्स कर देते हैं ये है जो स्नो साफ करने वाले होते हैं ना सिटी का जो होता है सिटी वाला मैं पिछले जो स्नो साफ करता 2-3 दिन पहले तो मैंने रोड पे फेंकी मैंने स्नो तो वो कई बेचारे उसका डोंट डू दैट कि इससे फाइन होगी तो मैंने कहा ओके मैंने नहीं हटाई मैंने उससे उसका मतलब क्या है इसे घर में लेके जाओ। What are you supposed to do? If you don't do it, वो उसने सारा बंदा निकाला मैं तो कल लाइट्स तो ना बंदा चलो ना भाई मैं जंप मार के बाहर आया वहां से यकीन मारे मैं तो इधर आया ना तो इन्होंने गाड़ी उधर मैं पहले फ्लैट की ना सारी मेरी क्योंकि वो सारा मैं कहा भाई डीजल 4x4 है तबाह करो इसका What a big thing. ये इधर मैंने आज तक ये प्लाजा सबसे पहले साफ होगा आज तरफ मैं 18 साल से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ यहाँ पे आ रहा हूँ आज नहीं किया। ठीक है इन्होंने इस दफा नहीं किया Yeah. I don't know why even highways हाईवे भी अभी तक इन्होंने टच नहीं किया सर नहीं अब मैं तो एयरपोर्ट लोग लेके आया Let's see this mid band. Come on, coming from there you go, done. Worked. Full 2 points. Beautiful. Beautiful mid band. ये इसकी बात कर रहे Yes, यार इतना प्यारा चला ये वाला चल गया 2 पॉइंट ले लिए बस Came from higher high, took my risk. Previous जो SL लगा था उसने इसको रिकवर कर दिया Still trying. Nasdaq is not making a direction yet. मैं सोचा कि शायद जो कल का इम्पैक्ट आज आएगा ये आज सुबह भी सोच रहा था PPI का 830 but almost next to no impact. tomorrow Possible. Well, tomorrow is big news too. We are looking at retail sales high impact at 8:30. earnings कौन सी Earnings, I gotta fix the website for earnings. Earnings, nothing major, nothing. Really big one is 26 February, NVIDIA. ये तो मैं तो ये करता हूँ सिम करता हूँ So, तो अभी ये करता हूँ अभी तो एरिया का मैं वेट कर रहा हूँ जो बड़ा जहाँ से प्ले करते रहते सिम में को और पता सिम नहीं जितना हजारों डॉलर के लिए रहते हैं तो कुछ सीख सकते हो Yes. See, Nasdaq is going up, so I want to push from 22,000 because upper line of magic band is sitting at 22,000. That is my plan.
I also have green teas, the flavor one, right? हाँ, 22,000 for me. Thank you. Thank you. Come on, this time break 961, man. I want you to go inside 22,000. Good, 955. Little bit more push, please. One more mid-band and go up. Yes, I'm doing. Sure, that's what my plan is. 5 micro, 22,000. And exit at 22,035. Let's go, let's go, let's go. Push more. Actually, my exact order is 21,993. That's where I'm sitting for Nasdaq. मैं 21,993 पे हूँ. Precisely. That's where the magic band on 60 minutes is bending. Come on, go, go, go. Break 64. And I'm doing ES, 6103. Let's do a bit of a math here. How far ES has to go? If this goes to 950, 960, 22,993 minus 960, 33 divided by 7, 5 point approximately, 6097 plus 5. Yeah, 6102. पहुंच रही है सर, आने दें, जिधर भी आती है आने दें. ठीक है सर, नो प्रॉब्लम. जो 35 पे चली जाए, निकलना भी है, स्टॉप लॉस भी उसके साथ है.
रियस में 612 पे हाँ जी। तो शॉर्ट करना वहां से बैठा हूँ। नहीं, 990. Come on, don't do this to me. Push up a little. 3 points से रह गया मैं. Reverse magic point. All right, it's too bad, so sad. It's okay. इनकी भी बात कर रहे हैं। मेरा NQ 3 पॉइंट से रह गया, बाकी तो हो गया मेरे पास. मैं बैठा हूँ 993 पे। ठीक है, मैं भी वहीं बैठा हूँ सर, लेकिन अभी वहां से मुझे नहीं लगता कि अब वहां से पिक होगा. वहां से मेरा गेम खत्म हो गई है. एक दफा अगर और हो जाए तो देखो. Area's technically done the R1 ticks. ना ये भी जा रहा है, देखो Nasdaq कोशिश कर रहा है. हो गया जी, पिक हो गया जी. मेरा भी पिक हो गया ऑर्डर. 22,000 ऑलमोस्ट. 3 पॉइंट. स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा था. कितनी दूर लगाया था Nasdaq में? Nasdaq में तो 30 पॉइंट दूर होता है. नहीं नहीं, 15 पे क्या मतलब? 93 का 15 भी नहीं अभी आया तो वो तो बनेगा 22,008. स्टॉप लॉस तो 12 टिक्स 12 टिक्स Nasdaq में. सर ये तो एक कुछ भी नहीं है. 12 टिक्स डिवाइडेड बाय 4, ये तो 3 पॉइंट है. वो तो ऐसे खा जाएगा. Nasdaq में स्टॉप लॉस में 120 टिक्स का लगाता हूँ, 30 पॉइंट्स दूर. I don't know where it will go from S1 or here, but 93 is picked up. मिड बैंड पे 2.76 कितने का स्टॉप लॉस लगाओ? यहाँ से मिड बैंड रिस्की है, वेट करें. हायर हाई माइनस 2 पॉइंट लेने हैं तो स्टॉप लॉस कितने का लगाते हैं? 1.2 मैं स्टॉप लॉस लगाता हूँ ज्यादा, 4 पॉइंट का. यस. मिड बैंड फिक्स तो होगा ना सर, तो स्टॉप लॉस होगा तो निकल भी जाता है ऊपर जा रहा है. 22,000 पे गई नहीं. सर ये में भी क्या बोलते हैं क्या करना यस तो हो गया, एरिया भी डन है. अगर आपने 2 नीचे आ गया था, उसने आपको 3 पॉइंट दे दिए थे यस में. यस, 0 रखा आपने 3 रखा था, जिसने 2 रखा उसने भी बना लिए, जिसने सारे बन गए. इट्स ऑल डन. है नहीं नहीं, मैं लेता हूँ नो प्रॉब्लम. हाँ हाँ, ये मुझे रेगुलर चाहिए था, सादा. हाँ नहीं, मेरे पास है ही नहीं है, आज लाया ही नहीं मैं. अच्छा तो मुझे अब ये बताइए
जब एटीएम सेट करते हैं हाँ तब मैं जैसे एनक्यू में भी मुझे लॉस हुआ मतलब नहीं नहीं, एनक्यू तो आप ना करें, एनक्यू बहुत तेज है, लेकिन 120 टेक्स दूर रहना होता है। स्टॉप लॉस होना स्टॉप लॉस दूर होना चाहिए, क्योंकि ना 120 टेक्स 120 सब इसी तरह एमएनक्यू में भी इस तरीके के एमएनक्यू में सेम। मैंने आपको नैस्डैक को 30 पॉइंट्स तो दें उसको, ब्रीदिंग रूम को। एक प्रॉफिट जितना बढ़ गया तो टेक टीपी तो जितना मर्जी करें अभी तो। अब यहाँ से एक दफा रिलीज हो तो लेट्स सी कहाँ पर प्रेशर आता है। और फिर इसी तरह जो हम एटीएम बनाएंगे कि ईएसपी या गोल्ड की पहले आप गोल्ड का मुझे बताइए मैं गोल्ड नहीं करता, मैं ये और वो बोला हूँ, मैं गोल्ड वाला। हमारा जो है स्टॉप लॉस कितने किलोमीटर सर ये रिलेटिव है, मुझे थोड़ा सा दे, मेरा ट्रेड पॉजिटिव आ रहा है। आई एम मेकिंग माई मनी, सॉलिड मनी, solid money now. 93 to 73, 20 points, 15 points, done. Exactly, I'm done. Good. End of the story. I am done my trade. Congratulations, everybody who took their profits. 93 was the number. Congratulations. Don't say you didn't make money today from 93. 93 was the entry. Everybody should be in profit now. Everybody should be in money from 93. Done. Excellent. Said do. All right. Then midman actually kind of worked too. So we're done from the number. It gave us a good swing from 93 to 73 was my number. And I'm done. Now Nasdaq is going to go blast to the bottom side. But we don't care. We are done for the day. And we are done for the day for Nasdaq. One single shot and we are done. What is my quant tower saying here? We are in profit. That's good. Excellent. Close positives. We'll enter again later. If you like to trail, it's up to you. No, don't please don't. Then R1, no, you don't take R1 again. And once it's done, it's done. If you just short anywhere right now, you will make money, guys. Like from, the areas, of course, you're done. We'll make a lower high and then black candle to the downside, and we should be okay. Now we'll try to make a divergence. Now the next area, watch out for 22,000 and let me calculate this a little bit. Let me calculate this at 22. If it goes up, so 6111 minus 6100.
11 times 555. First, it has to do a retrace down to 927. It should come to 927 at least. Should, oh, thank you. Bahut shukriya. Thank you. Oh, no problem. No problem. Thank you. So let's look at some math here. So 996 made another divergence. Should come down to 927 first to test that support, which is the previous high. You guys get in third. Yeah, 80 is okay. 80 is okay. 52. So Nasdaq, wait for 60, please. Yeah, that's good. तीन में तो पॉइंट ऐसे 93 से हाँ के बहुत करीब ईएस में ठीक है फिर 4 पॉइंट ईएस में होते हैं 12 टिक्स होते हैं नैस्डैक में तो 30 एक पॉइंट में रखता हूँ अगर ये उसकी स्विंग बहुत बड़ी है ना सर लेकिन वो जिसने 93 से एंटर हुए थे वो पता कितने नीचे गई है ऑलमोस्ट 80 73 तक बट एनीवे इट्स ओके नो बिग डील सर end of the story nothing to worry. Bullnox is done. I took some $212 per trade. Bullnox, let me disconnect. Apex is done. Which else is Quantower? That's not done yet. All right, we're heading back up. It's testing R1 one more time. Let's see if it breaks it or goes up to. Where's my... Nasdaq wants to really test 22,000. Two higher highs.
All right, broke, but still struggling. Maybe finally touch 22,003. Let's see, still wants to go up. Which stock is pushing it up? No, it's having a hard time climbing. Nasdaq and yes both. Yes, ES now wait for R2. To a 7. Still wants to climb more. Let's go to R2 now. It may actually stop somewhere first at 30 zone, maybe. No, more up. Nasdaq just shot up. R2 is coming, guys. 611. Yes. Yeah, we're inside R2.
There you go. We're inside our. Nasdaq high 44. Yeah, so we're inside R2, guys, for very close to Nasdaq R2. Look at this single candle, 60-minute just went from 870 to 50. Assam ji. Still going up. There you go, guys. We are inside R2. R2, I'm done my area. Just 58. Oh, too bad.
If it shoots up, don't take 60 now. Don't take it. It will look at so much little gap, 22,100. So it's so little. So take that if it shoots up. Then 58 it went. So don't take 60, guys. It came way too close. And if it picks up the speed, it may go 30 more points. So 60 plus 30, maybe even higher. But I'm calling it R2 done for both. 22,060. That was close call, but it's okay. No trade means no, but ES worked to the dot. ES shot up 93 points. ES area is done, guys. So is Nasdaq. It's 58. Let's see if it's trying to push one more time. Maybe not. I don't know. 30-20 is struggling. Come on, give us a retrace now. Enough. No, not yet. Still wants to go up. All right, I think we're done. All right, starting to climb down, but let's see.
Doesn't want to climb in a single shot like yesterday, but it's okay. Still trying to climb down from 60. That mid-band work too. Still mid-band 1510 giving. Nasdaq doesn't want to.
30-20 mid-band is being tested now. So whether to you took 11, 12, 13, 14, your ES area is done. Now we wait for S3. Or mid-band 30-20 worked as well. Coming from an area, 30-20 mid-band. Now we're waiting for a big push from Nasdaq to go down. Let's see. Maybe make a divergence on 30-20, break 3113, but let's see. All right, well, 10:59 areas are done. Everything is done. Oh man, it'll be a good drive back. I think roads are clean by then. May run a short session, but our areas are done. For Nasdaq, we kind of missed it by 2 points, but it's okay. So Nasdaq is in consolidation now, up and down 22,000. Did it make it a support? Let's see. Testing the area one more time, your R2. R2 लिया सर ठीक नो प्रॉब्लम मैं गोल्ड में से गोल्ड में अच्छा गोल्ड के एरिया या किस तरह वैसे ट्रेड अच्छा नहीं नहीं लेकिन मैं गोल्ड में सिर्फ देख लूं कि गोल्ड 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 मैंने अपने 30-20 को एक सेकंड मेथड सिर्फ चेक कर लूं दिस इज फुल मैक्सिमाइज उतर रही है हल्की हल्की लेट्स सी Happy, I'm not sure if he's live. I don't know.
ये 2020 में देखें गोल्ड नीचे बार के विक बनी हुई है। एक सेकंड में अभी देखता हूँ गोल्ड आपके लिए, एक सेकंड बस। बार के नीचे विक बनी हुई है, इसका मतलब नेक्स्ट बार में जाएगी। जानी तो चाहिए, मैं अभी देखता हूँ। अभी तो यस जो है ना R2 टेस्ट हो रही है, ट्राइंग टू टेस्ट R2 वन मोर टाइम। जी सी 11 o'clock next candle. Let's see which way do they take us. मैं बस सर लोड कर रहा हूँ GC यस। GC में अभी तो कोई एरिया नहीं था, लेकिन 30-20 कह रहे हो GC। GC का कलर ये है। Okay, duplicate tab. हाँ, इसको अगले बार पे जाना चाहिए टेक्निकली, लेकिन ये कंफर्म होगा जो है ना बार के बाद। तो बीवी ऊपर है, हर चीज ऊपर है, इसमें से बाहर में फंसा है। हमने लॉन्ग किया शॉर्ट बॉटम ऑफ द बार से, ठीक है, फिर तो प्रॉफिट में होंगे हम। हाँ, जानी चाहिए लाइक 29-49 अभी जा रहा है, बार बन रही है। ये ठीक है, दैट्स फाइन। ग्रीन है तो बाय में रखे, कभी भी अगेंस्ट द कलर नहीं। जब भी मैं हमला करता हूँ हाँ हाँ, तो खराब होंगे नॉर्मल है, कोई ऐसी नई बात नहीं है। हर बंदा जब आउट ऑफ द वे जाएगा डिरेल हो जाएंगे आप। तो पूरे एक बार दो मिनट में yeah, now we're just waiting for the retrace somehow. Let's see if it takes a retrace yet. No buying until high. It's high to go low, guys. No buying until right now. Nasdaq doesn't want to come down at all. Maybe 22,000 is the next level. Back into the area. सर अभी कौन सा ये चल रहा है Yes, the R2 में दोबारा चली गई। Nasdaq is डाइवर्जेंस लगाएगी 3116113 को तोड़ रही है। Strength is not going up on 30-20.
Nasdaq 10 up, 10 down. Break 3114, man. Make a divergence. थर्टी ट्वेंटी की मिड बैंड कौन सा है? नहीं सर, 30-20 का मिड बैंड हो चुका है। हायर हाई से आया था, डन है। अब वो डाइवर्जेंस बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 36114 पे डाइवर्जेंस बनेगी, उससे पहले नहीं बन सकती। या डबल टॉप तो बने, आपने पहले नहीं लेना। नैस्डैक का जरा थोड़ा स्पीड नीचे की तरफ आ रही लगती है। एस टू भी डन हो गया है। सॉरी, एस टू भी डन हो चुका है यूएस में। ईएस में R2 S2 नहीं, S2 की तरफ तो अभी रेजिस्टेंस जोन में। नैस्डैक 22,000 को अच्छा सपोर्ट बना लिया। हाँ, यानी 22,000 से गिर ही नहीं रहे ना। अपर बैंड कमान 14 पे जाए, डाइवर्जेंस बनाए, ताकि मैं 30-20 का डाइवर्जेंस का ट्रेड लूं। Just so what would be the divergence trade after the mid band when it makes a white line? Come on. 611325. No, we don't go against the trend. When the divergence gets confirmed, it has to break mid band 30-20. Then we'll worry about it. So 6106.05 minus 5. So 6100 would be my entry.
Just 2 more ticks and divergence will get, because your price is going up, strength is not going up. 30-20. So divergence will get confirmed at a black candle. So let's say 311,375 minus 8.5. So around 6105 divergence line will come. हम बोलते हैं कि 40-20 पे divergence आती है जैसे ही 611375 को तोड़ेगी ना, तो वो हायर हाई बन जाएगा, लेकिन नीचे से स्ट्रेंथ और मूविंग एवरेजेस नहीं जा रही ऊपर, राइट? तो वो मुझे बता रहा है कि यहाँ से ट्रेंड वीक है, मीनिंग प्राइस जा रही है लेकिन उसमें जान नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है। वहां से फिर मैथ शुरू होगा मेरा 61175 375 से या 4 से कि आई वांट टू sell from, so I'm just waiting. My divergence would start if it makes it first. It has to make a higher high first, which is around 2 points. Still struggling in this area very much, because Nasdaq does not want to do anything, and it's been what 15 minutes since the new candle. Gold में सिर्फ area. Gold में too fast, meaning I can't analyze anything. ना earnings analyze कर सकता हूँ, ना news analyze कर सकता हूँ। तो gold वाले तो सिर्फ जो है ना, आपने इंफॉर्मेशन की पोजीशन जैसे गोल्ड का है एक्सपेक्टेड है 2977 हम गोल्ड का से इन्वेस्ट पे गए, हाँ वहाँ जाके सेल कर दिया, वहाँ पर ऑर्डर लगा दिया। यहाँ पे 2977 पे जाके इसको यहाँ सेल लगा दे। ठीक है, ये सेल है इसकी सेल जो होगी हम 2001। इसमें जो अभी सेल लगा है, ठीक है, इसमें एटीएम चल जाएंगे। एटीएम नहीं, आप अपना स्टॉप लॉस जाके ऊपर लगा दें कि अगर ऊपर वाले एरिया से $1 भी निकल गई तो बंद कर दें। जैसे 2977 पे हाँ कितना ऊपर लगा नहीं, ऊपर वाले एरिया से डॉलर इवन एक टेक ऊपर, ऊपर वाला रेंज क्या है एरिया की?
2982. ठीक है, तो 83 पे अपना लगाएं और दैट्स इट, डन। गोल्ड भी एरियाज को करते हैं, एनक्यू भी आप एनक्यू तो स्ट्रिक्टली एरियाज, आप कहीं से एनक्यू में घुस जाएंगे, आप लॉन्ग जाएंगे वो शॉर्ट चली जाएगी, इस 50-50 है विदाउट एरियाज नैस्डैक। ठीक है। हम्म, अभी जब शाम को पहले तो मैंने ये लगाया ठीक है, जीसी पे, ठीक है, फिर मैं गया एमजीसी पे, एमटीसी पे, हाँ ठीक है, उसमें हमने ये नीचे वाला लगाया बिल्कुल ठीक है, और उससे कभी लोड होगा उससे फिर एक नीचे वाला बिल्कुल स्टॉप लगा। एग्जैक्टली। Yes, is still struggling, wants to. Not. No, Nasdaq is not doing a free fall at all. Come on, Nasdaq. It should come down to at least 967.21. Previous week high. But no, it wants to. ES wants to make a divergence first.
तब ठंड पड़ गई मार्केट में। सर मेरे सिस्टम से वैल्यू एरिया का मैप नहीं है 60 मिनट का चार्ट 60 तो करा बट वो डॉट्स वाली चार्ट मैं दिखाना। इधर काम नहीं कर रहा आज माउस पैड वगैरह कर हाँ वो तो अभी कुछ रेड पे नहीं वो बास बात बोल रहे हो ऊपर नहीं नहीं वैल्यू एरिया नहीं बनी वो भी और बोलो हाँ है मुझे भी बास में भी वो भी ऊपर ग्रीन मतलब ऊपर ग्रीन रेड भी बास में नहीं है बात कर रहे हो अच्छा वो खाली एरिया अच्छा वो वैल्यू खाली एरिया वैल्यू चाहिए any desk के मतलब आ रहा है कुछ
आ रही है जी, उतर रही है Nasdaq slowly coming. ऐसी साड़ियाँ घड़ियाँ में उस तरफ करते हैं। अच्छा, ठीक है। वो साफ करना। मैं चाबी दे दो। गड्डी की जेब पर निकाल देना है जैसे। मान भाई जी सर। घड़ियाँ मूव करो नहीं। अरे Yes. साड़ियाँ ट्रेड फंसी है। वो उसका सिर्फ फॉब है। फॉब रखा हुआ है। इस बॉक्स से नहीं मैं तो फॉब रखे नहीं होगी। चलो गड्डी पा के ना जाना है मैंने लगता ही है। ये जैकेट कितने वजन में करेगी? मैंने दे देना कर।
हो जाएगा। मेरी मार्केट भी एरिया से अच्छा नहीं करते ना मैं थोड़े एरिया से क्या किधर तक है जी alright am I in a trade accidentally no I hope not that's nothing major because you can't leave the live threshold trades open like that otherwise you're gonna get killed. Oh man, it's cold out there. Got rejected from R1. How to replace? I missed a lot of chat. What am I saying? Make a video for. Make a video how to replace order. Place order. It's all there. Ninja Trader. Pivot for Nasdaq. Got rejected. So R1 became the support and went back up. Let's see if it makes a divergence again. Good. Good reasonable profit on. Let's see if it. तो आपने इन आज मुझे एरियाज के बारे में थोड़ा सा गाइड करना ठीक है। जिधर भी एरिया है R1 पे बेचे मैं आपको बुक करने जाता हूँ ES पे हाँ MES पे नहीं इस तरह ही करें इस तरह अनअटेंडेड ट्रेड नहीं डालें आप उतने नहीं, एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं वो एटीएम से ATM लगा ठीक है फिर ठीक है तीनों पे ATM लगा देता हूँ और मैं आई वांट टू स्टिक विद ओनली एरिया नहीं ओनली एरियाज नहीं है ना किस दिन ना एरिया है हाँ मिड बैंड अभी देखें ये मिड बैंड इतना ब्यूटीफुल चला है बहुत जबरदस्त चला है मैंने आपने लिया ओके ओके लोअर $100 ले लिए ये एरियाज के लिए आप बाज का पूरा पूरा दिन बैठे रहेंगे और अगर गलत हुआ तो आप कोई गलत ट्रेड में घुस जाएंगे एरियाज के लिए फिर आप कहेंगे यार मैंने एरिया से आगे पीछे नहीं जाना और रात को एरियाज उस तरह नहीं आए रात को आप बैठे ना 6120 था आया ही नहीं तो फिर सुबह उठेंगे वो गलती से रह गया ट्रेड भूल गए कैंसिल कर रहे हैं उसकी एक यस 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 तो एरियाज के लिए भी एक साइंस होती है अब मैं शॉर्ट में हूँ आज भी देखें उसने ब्लैक कैंडल तो बनाई बट नॉट रियली सॉलिड रिट्रेस बना ये देखें ये मिड बैंड कितना सॉलिड दे रहा है आपको पैसे अभी ट्रेल मैं प्रॉफिट में हूँ अब ट्रेल करना मैं ट्रेल करना शुरू कर रहा हूँ क्योंकि मेरा होता है ना कि ब्रेक इवन के बाद ट्रेल करो 25 लॉक हो गए हैं इसमें से मेरा अभी है $20 लॉक हुए मेरे तो ठीक है मुझे दिखा रहा है 120 है तो 20 लॉक हुए टॉप ऑफ द बहुत स्लो मार्केट हो जाए ना लेकिन आपने वो भी ग्रीन और उसमें रेड रहना है टॉप ऑफ द एक सेकंड दीजिएगा मैं 2 माइक्रो नास्डैक लगा के छोड़ दूं इस अकाउंट में कुछ ना कुछ तो दे ही जाएगी ऑलराइट लेट्स सी पोजीशंस I'm open here let's threshold is good full $10 more and my threshold is full take profit sucks for PA thresholds that kind of blows Quan Tower today made 180. अच्छा जी बता सॉरी आप कुछ बता रहे थे हाँ जी बताएं बिल्कुल सही है नो बिल्कुल सही है कौन से वाले है गोल्ड है क्या है गोल्ड मैं नहीं बता कि गोल्ड माजिद भाई से कंफर्म करिएगा कि टॉप ऑफ द बार की एक्यूरेसी कितनी है ES में है 30-20 के टॉप ऑफ द बार पर लगा दें अभी भी लगाया होता तो आ गया था ट्रेंड के साथ ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं और 2
आपके यहाँ 4 टिक्स निकल गए ना, 4 और 4 8, 80 सेंट अगेंस्ट आपके गई तो निकल जाएगा। Working? No, I don't care about ATMs anymore. I'm no longer going to be working on any ATM. I've been instructing to teach people how to do manual, and no ATM for Nasdaq. Sorry.
यार बेटे वो ब्लोर मांग रहे हैं आपको बुकिंग नहीं वापस किया जो गो राइट अवे शीज करेंगे तो थिंक यू क्या करो बात कर जब ये तो पहले दे रहे हैं शीज करेंगे ट्वाइस okay better point this is very bad impression so leave the bad वो दोबारा वो नहीं करेंगे मुझे बताना तो मैं करूँगी ये सारे सिस्टम में ठीक है करके बोलिए अजय आ जाए थोड़ा सा विटामिन सी ला लो hello yes very nice good night good for you one second come again which location that's great so what time 2:10 p.m. It should be good. That's good. So send me the message like with this details and you see when you booked it, you got the confirmation from them. You know? So send me the picture of that one, then I will get back to you in the evening. Yeah. I will check my availability and get back to you in the evening. Right now I'm busy with somebody. Okay, just send me and after 7:30, definitely I will get back to you and we'll make the schedule. Okay, no worries. Bye bye.
Are you coming, sir? I will go to the Mariana. जाइए बेटे ओ, कैसे खराब हो गया देखो बेटा दिस इज रिलेशनशिप खराब हो we have to buy the new one for them okay? ये एक्सटेंशन वाला है कि ब्लोर की वाला है ब्लोर की वाला हाँ ब्लोर की वाला डायरेक्ट ब्लोर की वाला तो नहीं एक्सटेंशन वाला है तो उसे उसको अच्छी तरह उसको प्रॉपर टेप करो उनको भी वो उसका नंबर लो हम उनको एक्सटेंशन वाला ही देंगे ओके सो दिस इज नॉट फेयर जो वायर ब्लोर से निकलती है वो तो ठीक है ना जो ब्लोर की इतनी वायर है वो तो डैमेज नहीं है जो एक्सटेंशन वायर लगती है वो डैमेज नहीं है so take the pick see my friend this is damaging the relationships उस वायर की पिक्चर लो उस ब्लोर की पिक्चर लो उसको मॉडल नंबर की पिक्चर लो ठीक है so if you give somebody the thing to be and you damage and how do you feel so उनको जाके बताओ उनको I am going to buy a मतलब ये सारे उस ब्लोर की पिक्चर लो उस वायर की पिक्चर लो एंड let's go buy the new wire give it to them before evening ठीक है this is good ठीक है Right. करेक्ट करेगा किन्नू शुनू पए ने बड़ी स्पीड से आई है जी लिया जी कुछ किसी ने प्रॉफिट लिया मैं जी एक ही ट्रेड से इतना बना हुआ है आप बैठे हो मैं बैठा हूँ सर मैंने कहाँ जाना है मैं कर रहे हो नहीं अब मैं निकल जाऊंगा अच्छा या
लो जी, close positive. Done. Now I get out because I have to exit at 9:27 से ज़्यादा नहीं बैठना मैंने. 9:27 से ज़्यादा नहीं बैठना. All right. Make sure you exit at 9:27. Because that's your support. If you're trailing from the area, 9:27. Done my trades for the whole day. It was worth coming. Love ji, speed se aa rahi hai niche. Take profit is done. Apex is done. Bullnox is done. This company is done. Perdia is done. Perdia no. Legends is kind of behind today. All right. Yo sir, any desk? मैं ਤੁਹਾਡੇ area set करना. One second. What a beautiful day. What trade did I take? I took an area trade from Nasdaq, and I left on ES 6112. I entered from there, and then just took a free fall. So first resistance support was 951. Where did it come up to? 942. Yep, that was the previous candle, 2 candles ago. Now, if it goes to 980, we'll see. But the areas are done today. Everything is done. I took the Nasdaq. All right. Sorry, guys. आपने मुझे अभी भेजा? जी हेलो कैसे हैं वो आ रहा है तो छोड़ दो ठीक है Okay, somebody passed. Take profit. What does that mean? SARS Patel. Congratulations. Disconnect. Sir, एक बार ये नहीं डस्ट है ना? 1521 236 49 accept करना. One, 2, 3, 4. देखो सर एक ऐसी सर क्वेश्चन है ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ ਮੇਰਾ क्वेश्चन सर मैं ना 15 के अंदर देख रहा हूँ R1 टच होके ऊपर चला गया तो मैं इतनी सी भी R1 टच होके होल्ड डाउन आएगा ठीक है ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ R1 ਨੂੰ ਸਪੋर्ट ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਸਰ ਠੀਕ ਹੈ मैं सिर्फ लॉजिक पूछ रहा ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਰਡਰ ਲਾਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ मैं उधर देख रहा ठीक है ये लेकिन लॉन्ग ना करो क्योंकि भाई उन्होंने क्या हाई टू गो लो शॉर्ट ही रहना सी लेकिन क्योंकि इतने शायद वो ब्रेक कर जाए ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਰਟਸ ਲਾਉਂਗਾ ਚਲੋ ਡੈਮੋ ਹੀ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਥੱਲੇ ਆ ਰਿਹਾ शॉर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 150 ਕੱਢ ਲਏ ਸ਼ਾਰਟ ਪੈਸੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜਲਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बहुत लगे चल अगर बाय करनी है ना S1 S2 तो लो क्योंकि R2 तो आ रही है फिर R1 स्किप कर जाओ S1 ले लो
स्पेशली नैसडैक दा ते ये मैनू एरिया नजर आ रहा है 927 वाला। हाँ लेकिन ये नंबर टू नंबर चंगी मूव कर देने। नहीं नैसडैक डन, वी आर डन एब्सोल्युटली। R1 डन हुआ। R1 का मैंने क्विकली मैथ बता दूं, व्हाई डिड आई पिक 933 what was 22 हाँ। हम्म। ये मिड बैंड भी चल गया, आपको लिया था, एक पॉइंट दिया उसने, लोअर लो से आ रही है ना। डिस्कनेक्ट कर लें निंजा, रिकनेक्ट कर लें। न्यू चार्ट, थर्टी मिनट, चार्ट tools, import. Large triggers are twisting. That's the only thing bothering me. And Nasdaq went back up. Made the night high as a support. So 950 to 920. So why am I looking at 927? That was the night high. Call it. I'm gonna call R2 done. Okay, that will be better. Okay, thank you. Bye-bye. Testing R1 one more time. Let's see if it's resistance or not. Should act like a resistance. Shut back up.
How big is the swing? Almost 50-point swing. Going up again. Yeah, yeah. सर इतने सुपर एरियाज ਦਾ यूजर नेम पासवर्ड पा दो मैं तो देखो तो हाँ जी हाँ जी उसके मेरे गूगल में से करा दो let's see if it works as a resistance coming from the bottom. There's divergence on 60 minutes too, to the downside. So it should come down fast on Nasdaq. सर क्वेश्चन हाँ जी जो रेप्रेजेंट है हाँ जी R2 ये 6114 रिप्रेजेंट कर रहे हैं 6111 देखो दो ने ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਲੀਵ ਹੈ ਕਿ 10.6 ਯੈਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਯੈਸ यस डाइवर्जेंस तो बना दी 30 20 22,000 पे डाइवर्जेंस बनेगी लेट्स सी डन हो गया डन हो गया जी मैं सेव करता है सारे बन गए जी Come on. Go back up so I can take a divergence trade on Nasdaq. It's severely overbought. 54-point swing. Go back up so I can sell above. Not yet, not yet. Let it break. Go to higher high. Divergence trade. So far, you have lost 2A accounts. I'm not sure what type of trades you're doing. If you're doing randomly, you'll lose 1,000 accounts. It's just a matter of, I don't know which method you're picking. Go sit in the office or check the live stream. You have to trade with a method. You can't just. So these EAs are supposed to give you the whole benefit to. Yes, not it. No, it did not create a divergence, so I missed that trade. Yeah.
And I don't know if it's a free fall, but it didn't make a divergence. Divergence was if it goes to mid band, goes back up, breaks 22,000, then I would have sold, but not yet. Let me see how my son did. I don't take S1. Let me see if it's coming from where. Right now, 30-20 mid band worked. This is normal retrace. Beautiful, beautiful. I'll be right back. एक बजे आएगा वो। ठीक है सर आज आप नहीं कर रहे थे ट्रेड अपनी होगी सुबह डन होने लगे 8 बजे से हमने डन 8 अच्छा आज ऊपर ही हुई बात कर रहे हो हाँ ये एक ही होता है यार सारा दिन एक ही ट्रेड गई कि पूरे महीने में 2 या 3 ट्रेड होती अच्छा है हाँ आप भी डेटा यूज हो जाएगा यही यार नहीं Yes, Nasdaq में कल एक बंदे ने 75,000 बनाए राइट टाइम पे उनको पता चल गया ना वो लोग रोज चार्ट्स देखते रहते हैं वो रोज ट्रेड नहीं करते एक मौका मिला उन्होंने हिट एंड रन किया हिट एंड रन पे उसको 75,000 मिले ओके ओके ठीक है Before I start, मैंने sign up कर लिया है जैसा? And I need to understand it. किधर बैठूं? एनीवेयर मैं भी आपको सिखा देता हूँ एपेक्स की क्या रूल्स हैं ओके सब्सक्रिप्शंस प्लान्स can use $30 दीजिएगा
ओके, आप लोगों के पास एपेक्स का कौन सा अकाउंट है? कौन सा? मीनिंग कौन से साइज का? मैं उस हिसाब से फिर एक्सप्लेन। 50,000, 25,000? नहीं, 25 का ही है ना? Yeah, 25. I'm Okay, just gonna bring my. no problem. So let me quickly, somebody asked me, let me just cancel his subscriptions. Legends, cancel. इतनी huge divergence है 60 मिनट में. ये price extreme, this is could go anytime below 21,510, guys. Just be careful for Nasdaq, because 60 minute has a divergence, but first it will stop at S2, because I know S1 is there, pivots are there, but S2 is my 730. I'm thinking of 730 first before I go any. I look at anything, but may not happen today. अच्छा, अच्छा, ठीक, तुसी ला लो। नहीं शर्त आ रही है सर। अच्छा, अस्सी भी तो वाह वाह किन्नू दे देते। Excuse me. All right. Simple buying. Okay. तो सभी मैं ना वो bottom of the bar पर उसके बाद आया कि जो दुनिया में निकल गया तो कोई नहीं मेकअप कर रहा है. Sure, ठीक है, thank you. नहीं ओके सर, थैंक यू. What do you understand by this one? So this is the one that you see the areas. If it drops, first it has to break 927. That's for Nasdaq. Let him. मेरे पास फ्रूट सब पड़ा है अभी. All right, so $25,000 account. Your target is $1,500. Okay. In Apex, they don't care how much you make, how fast you make. You can pass your exam in one day. However, only issue with Apex I have is the ability to live trailing threshold. That's why I haven't pushed Apex for almost a year, because there are many companies. What I meant by this is, let's say you take a trade, 6103. You go long, price goes to 6106. What's your profit? $150. That's the if you don't close that profit, Apex will start counting from that number. That's the highest this person has seen. Now, if the price comes down to 6101, you're still in profit. Back to 61, maybe 4, or as long as it's above 3. You, but if here you lost $100, but in reality, if you close, you generally would close your trade, right? Like Legends. But Apex says no. We are going to deduct $100 from your threshold. So they use a word called live trailing threshold or dynamic threshold, meaning each trade, when you're inside a trade, you gotta. So majority of users with Apex are working with very strict TP and SL. So sorry.
हाँ हाँ नहीं नहीं नहीं, संजय का फोन है, वो जिनकी बात करती है करती है, हाँ हाँ वो कह रहे हैं कि ये मैसेज हाँ मेरा ख्याल है उन्होंने सिम कनेक्टेड किया हुआ है शायद। ये तो लेजेंड्स है, ये हाँ जी। लेजेंड्स है ना, जी 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 तो उनके साथ चैट कर ले। वो उनके नाम है क्या नाम है, नहीं नहीं हमारे साथ नहीं, लेजेंड्स के साथ दे फिक्स दैट। ओके लेकिन क्योंकि उन्होंने मास्टर साइन कर ली है सारी चीजें, हाँ बाइक किया ओके ठीक है, फिर उनसे चैट कर लें, वो बता देंगे उनके साथ कि ये उधर का लेजेंड का मसला है। ओके ओके थैंक यू हाँ संजय भाई So that's the problem with it. It is one of the How do one, you avoid that? you gotta go in with an exact TP that I would like to exit at $50 or $100 or one. Yeah. So you have to kind of be quick in terms of it. Let's say most of the people doing Apex are scalping. Like I am doing legends, right? So I sold it from an area. When I came back, let's say I saw $500. And by the time I came back, I saw $200. I closed, I got 200. But Apex will say, no, you saw 500. Why didn't you take it? So majority companies like Apex even take profit. Why don't they like it? I'll tell you the reason. It's so easy to pass. Let's say you can set up an area, sell from there, and by the time market will correct itself and come back and you are profit, they don't want that. They want you to truly show your skill that, okay, I know my TP, I know my stop loss, so these things. Bullocks is the same. Take profit. So some companies have it. I don't like it personally. It makes your job a lot difficult. That you gotta be attentive. That you have to be more disciplined. Like Unless you set it in your ATM and you set a stop loss point. no, stop loss is okay, but TP as well. Like so, you gotta have a TP. And problem with this in legends, the way I do it is if I take a mid band, right? I have my stop loss set as let's say minus $200. That's my stop loss, right? So my ATM is as this, that on ES on mid band, if I see $112, actually what is 10 ticks? 10 times $12.50. If I see $125 or 112, it will lock me to $0 in legends. So in that trade, I'm not losing any money, right? Even though I've seen $112, but I got zero. So legend says it's okay. So because sometimes a good mid band is $600. Like today, market open, the first pullback. Let's see the market open. I show you with example. If we scroll back to exactly 9:30, the moment market open, price was coming from a mid band. 849. So if you see this one, if you took this mid band at exactly 9:30, price was coming from a higher high. This gave you 8 points. 8 points, you don't care about 8 points because let's say you entered from 6082, okay? And the price first went against you slightly, but you know your stop loss, and then it shot up to 6089. So that's a 7-point trade. Now, theoretically, that's a $350 trade. 7 times 50 is 350. But the way I would do this is I would have locked it at the bottom. And in the morning, I got the first message I got from Vikramji on WhatsApp that at 9:32, they were done. Because in 2 minutes, or less than not even 2 minutes, a minute into the trade, you know how much money he'd made in that single trade, one trade? So 6082 minus 6089, that's 7 points. Point and a half you leave, so 6.6 points. Even 6089 minus 6082, 7 minus 1.5, 5.5. So that's a $275 trade. Yes, एक ट्रेड पहला मिड बैंड आया, ये हाई देखें, सारी तो चीजें आपके सामने, दोनों चार्ट ग्रीन थे. कितने मिड बैंड लगे? 1 2 3 4 मिड बैंड लगे.
उन्होंने जैसे मिड बैंड पे लिया वो प्राइस सीधी शूट ऊपर गई, उनका ऑटो ट्रेल चलता रहा। तो लेकिन $112 का रिस्क रखना है मार्केट में, क्योंकि होगा ये कि कई दफा प्राइस 112 पे नहीं गई, 100 पे गई, राइट? तो वो आपका स्टॉप लॉस मूव नहीं होगा जब तक वो 112 नहीं देखेगी, राइट? तो ये चीजें आपने थोड़ा सा, लेकिन no, if I'm going long, my first pullback is the highest one. Like that's my highest accuracy. First, trend changed, green to red, red to green. First, so if it's buying, I would buy right here. So this is a mid band. This is my first pullback. But after, so even here, this mid band is okay. This mid band is okay. But this one is not okay because here I don't have a higher high. So any higher highs, Okay, so you have higher highs, then go for it. yes. So higher high, mid band, you know your stop loss. That's it. Keep going it. Even if one hits bad, well, I watched your videos about the criteria of taking a trade. So it was both sides, the green, green. you That's also one. the red, red. Second, you said is the mid band. that's after, but the mid band is green automatically. Okay. Second is price must be coming from a higher high. Price must be coming from high. If it's not coming from higher high, I'm not taking that trade. Because you have to understand there are 5 things when they align, things are in your favor. Highest probability. Still it can fail, but you can say 90% I have watched everything. My large triggers are green, my mid band is green, my price is coming from higher high, it's not reversing from an area, and it's not coming with a divergence. So I watch for those things, and then if my setups are not there, I'm not taking that trade. So you have to So truly. those are the five. So I in the video I missed large triggers, but some users are watching large triggers too. So But we're not watching the areas. in this you don't. This is a mid band trade. This is not an area trade. No. Okay. So Here we don't worry about the area as long as we're following this. at least minimum have 3 conditions. Background must be green. Both green, both sides. Price must be coming from higher high, right? High, And high. if there is a divergence That's line, for long. that's for line. And So if there it is was a the other way around, it would then be lower low, price lower has to go. Yeah. So you follow these, you'll get a What was higher. the third one? Third one is your large triggers are green, your background is green, price is coming from higher high. These 3 are the must, right? Okay. So and then if you want to add one more, divergence line, no divergence line. Okay, so no changing it. Yeah, so that divergence line means that I may change my trend to the downside. What is the divergence line? Is that the black line or? Correct. Okay. That's the white line. White That's the line. white. I don't see, oh, at the bottom? No. Look The at this white line. Oh, You see this? Okay. There's a divergence. There's a higher high, another higher high. This mid band, you don't take it at a mid band, maybe much lower at a mid. So you can skip that divergence line. only the other thing that you were explaining with the chart, बताया था ना आपने 35,000 अच्छा वो मैं अभी बता दूं. देखिए आपका गोल क्या है. आपने एपेक्स लिया है, पहला दिन है, आपने 1500 बनाने हैं बस. पर डे में बनाने हैं? एक दिन में बनाए, 5 में बनाए, 7. एपेक्स के रूल डिफरेंट है, लेजेंड डिफरेंट है. एक माह है आपके पास, आपने कितने भी हैं? $26 या $30 का, $30 का, 80% ऑफ था. या तो आपने एक बाय किया है, आपके पास 30 दिन है. 30 उन्होंने आपको कितना कैपिटल दिया है? 1500 का. एक साथ नंबर भी अटैच कर दिया 25,000 का. 25,000 ने जाना है 26,500 पे. ये आपका, देन आप पास होके राउंड 2 में चले जाएं. लेकिन आप अपने का 26,500. इसे लूज करने के बाद how much you can lose? How much can I lose in that one? You can lose 1,500. That's it. That's the maximum you're allowed. आपके पास जो अकाउंट में पैसे हैं 1500 है ना. मैंने जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि 3,000 से बनाना है और 1,500 वो राउंड 2 की है, वो राउंड 3 है. पहले राउंड 1 वो एक्चुअल में, इसीलिए मुझे लेजेंड ज्यादा पसंद है कि लेजेंड में 2,000 है. वो
हाँ जी. How did I mess up much? No, I think just you put in 10 lots. No, I know, I understand that. But why that 30% that you're saying I have to make? Yes. That's the part I'm not. No, okay, what understanding. happens is a lot of people would like to pass it in one day. जिस तरह आपके साथ हुआ. Oh, हाँ. अब legend का rule different है. Legend कहते हैं, so legend says we don't want you to make all your money in one day. Okay, so they say make your money maybe in at least 7 days, right? Yeah. So that's why they. Mhm. So there is always a rule called consistency rule. That's in every company. Okay, so that is what I That's in want to every. understand. So what is that rule? They give you a target. Okay, your job target is to do this. So if you get hired by a company like Apex or Legends, they have give you a target, make $1,500. Okay, and you come in and you try to do whatever. So let's say some people hedge, meaning go long, short, whatever, however you manage to do. Now technically you passed yesterday, right? You passed, but they said no. All right, this person we need to judge for 6 more days, right? And they will look at how much money did you make day 1, right? Then they would take that number and divide it by 30%, whatever. So you So let's take say 10,000. 1,200 you made. Yesterday you made 10,200. Divide that by 30%. That number is now $34,000. So what they did was they took your target of 3,000 and made it 34,000. So basically, now in 1 month, they want to see 35. Exactly. Or they won't pass you, Okay. right? So Yeah, which, it's not let's say practical. yeah, it's not. It's not. But I can play with it on a higher. course. So Mhm. you could, like, if I just stayed with, as you have said, 250 a day or I'd stay under 400, it would have been fine. No problem. So Yeah. the moment I had somebody sit here and made 462 in that Mhm. 1,500, divided by 30%, their target became 1,540. So that's why I keep saying round 1, make 30, like stay within the target. So it's easier for you to compete. Now it becomes hard, right? Yeah. Then you're like, how am I going to make 34? Yes, the first day you made 10 grand. Yeah. Then they said, now this person likes to trade more, no problem, raise their target. Yeah. So it's like when I you're got it now. So 450 is the limit. Don't Yes. stay That's at for 400. legend. that That's for legend. Apex EA has, you can pass it in 1 day. Okay, but what is my, I know my. 1,500. तो एक दिन में तो नहीं है, like I want. चलो आपके पास 30 दिन है, 30 दिनों में कर But दे. if I do it in 1 day, You are okay. Then you That can go is under the the pay Yes, chart. yes. No, I signed up for the profit. Take around profit. the- Yeah, I You're did that too. going too fast, too quick on between these companies. अब इसके rules completely मैंने different. राज योगी legend के साथ। नहीं legend में क्या मसला हुआ? No, वो जो rule- नहीं वो rule इसमें उससे भी सख्त है. वेट करें जरा अपने आप. मुझे बता दें, नहीं इससे पहले कि इधर भी कोई नहीं देखें, ये कहते हैं टेक प्रॉफिट. कौन सा अकाउंट साइज कौन सा ले? 50 था. You have to make $1,500. Okay. उसको भी 50 3,000. Okay, आपने 50,000 वाला लिया. 50,000, yeah. So 3,000 you have to make. You cannot lose 2,000. Remember that. Yeah, Okay. yeah, I understand You cannot make more than $1,500 a day. Remember that. Okay. So that's your capacity. That's called the 50% consistency rule. that. Okay. So they don't want to see you make more than 1,500. Okay. So now Okay. I know. I So know now my your limit. limit is 4. Yeah. But that you- is in your second level. That's No, no, first yeah, level. First level में. हाँ, इनके टेक प्रॉफिट वाले पहले लेवल में करते. एपेक्स सिर्फ एक बुलनॉक्स और कंपनी है. एपेक्स और बुलनॉक्स doesn't care about round 1. तो But ये कितने दिन में करना है? मिनिमम 7, मैक्सिमम पूरे 30 दिन. तो इनका भी मिनिमम 7 है। इनका मिनिमम 5 है. इनके 5 है. But stick with the 5. 5 है. And stick with the 15. Stick, no, you may, if I were you, I would stick no more than like $500 a day. 5 करते 6 दिनों में आपका 500. अगर आप एरिया से आज देखिए मेरे साथ एक तो कई दफा मुझे नहीं समझ आती, मैं साथ बैठा हूँ फिर भी आप अपना ट्रेड ले रहे हैं, समझ नहीं आ रही. मैं आपको चीख एक नंबर भी दे रहा हूँ. अब तो मैंने आज तो I didn't. नहीं बिल्कुल सही है ना. मैंने पहले आपसे कहा पहले हमने एक एरिया लेना है जी. आप तो चलें अंदर भी, माजिद भाई भी एरिया ही पढ़ रहे थे. Yeah.
हमें एक नंबर कंप्यूटर ने दिया था ईएस का कि 6111 या 114 पे चली जाए, वहां से सेल कर दें, या मिड बैंड से। और ये देखें, अगर आपने वो नहीं लिया, यहाँ सेल किया होता, सिर्फ यहाँ पर, ये देखें कितनी बड़ी स्विंग नीचे आई है। You actually got few trades Yes. you could have done very nicely. How असल many points are we looking at? Point wise. एपेक्स में आपको 2 या 3 लें और बाहर आए, क्योंकि आप में एपेक्स में ज्यादा बाहर नहीं छोड़ सकते मार्केट के अंदर इतने। Because आप ये वेट नहीं कर सकते कि हाँ. हाई जाए फिर लो जाए, Yes. क्योंकि वो हाई काउंट करेंगे। Yes, yes. Just take it. Take 2 and points, take it. exit. If you took Going 2 ahead. points a day on Apex, you'll be done in 10 days, What are 15 you saying per day? per day, Yeah. or even per trade too. वो भी ठीक है, लेकिन 2 पॉइंट पे आप मेजर करें इसको। So 1500 on the profit one. टेक प्रॉफिट 1500 बनाने हैं और आपने 1500 लूज नहीं करने, लेकिन उसमें ये फायदा है, एंड ऑफ डे है कि मीनिंग वो एपेक्स, वो मीनिंग ये स्ट्रेस नहीं है कि आपने लॉक करते जाना है। Exactly. तो आप $115 छोड़ के ज्यादा भी ले सकते हैं। मुझे take profit का I read like a lot of people very good reviews. The on best part about take profit, which I'm about to finish my 5 Pro as well, the EA to Pro to सारे graduate हो गए, they give you daily payouts. Exactly. Daily payouts. So the first 3,000 is the hard part. After that, it's daily payouts. Daily payout. जितने बना लें उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। शाम को जितने बनाए आप ले जाएं। Exactly. That's what I like. That's why I signed up for it. But the first 2 are the hard. पहले तो 15 दिन ध्यान से चलाए ना उसको, अकाउंट को। ये तो नहीं है ना कि आपने आज जिस तरह मैंने 5 माइक्रो नैस्डैक, मैं नैस्डैक करता हूँ, एक एरिया से फेंक दिए थे, ठीक है, एंड आई टुक 2 ट्रेड्स होल डे, 5 एक दफा, 5 एक दफा, $200 हर अकाउंट में बन गए। 1500 का तो अकाउंट है, 200 बन गए, एंड आई एम डन, राइट? सो How many accounts? I mean, I've only signed up for Apex. I don't have any other accounts. no, you only have Apex. I have one more question for you. So ye jo, let's say, then once we have a live account, we can keep on working. But Correct. let's say when we blow that for some reason. You got to go back to round 1. Round one, snakes and ladders. Again, If they want you, Castro, generally the idea is that you don't want to blow your account. You don't want Like to, that's yeah. the whole goal is, Yeah, right? you So don't want- let's say you do take profit 1,500, then you Yeah. take profit another 1,500. नहीं, ये मेरा नहीं है, Yeah. sir. So after that, you basically would just keep making money daily. I have users who make like $200 to $300 daily on take profit, and at the end of the night take out. जिस दिन वो दिहाड़ी लगाएंगे, जिस दिन आएंगे, ट्रेड किया, नहीं किया तो नहीं किया, इट्स ओके, कोई आपको फीस तो नहीं पड़ रही। लेकिन एक पहला जो राउंड निकालनी है, वो जरा अपने प्यार से इसको लेके चलना है, क्योंकि ये सारा काम सारी mistake मैं करूँगी, नहीं। Yesterday was an honest, good mistake. You made 10 grand. That's awesome. Okay, शुक्रिया बात। No wrong. आपके राउंड 1 में बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो मर्जी। राउंड 1 कंप्लीट हो जाएगा, जो अमाउंट वो देख वो रहे हैं, उसमें फिर उस वक्त मैं आपको एक्सप्लेन, उसमें आपने 3,000 बनाने हैं। ओके जी, अल्लाह। ओ या डन हो गया सर, एक बार गया। सर मेरा क्वेश्चन है, तो मुझे जैसे मैंने अभी आपसे पहले कहा था कि
जैसे ये शाम को मैंने एरियाज बुक करने होते हैं तीनों इंस्ट्रूमेंट में, ईएस, ठीक है, एनक्यू एंड गोल्ड। ठीक है, ईएस में जैसे आपने बताया, एनक्यू में आपने बताया कि आपकी जो एनक्यू में 35 पॉइंट का स्टॉप लॉस, लाइक 120 टिक्स, ठीक है, 120 टिक्स, यस यस। 120 टिक्स। और ईएस में सर कितना होना चाहिए? मतलब ईएस में 5 पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं कि अगर 120 की वैल्यू है 125 हो गई तो निकल जाए यार। 120 टिक्स का स्टॉप लॉस। 120 टिक्स ईएस में अकाउंट दे देगी आपकी। ईएस में 20 टिक्स। 20 टिक्स, ओके। नैस्डैक में जरा दूर लगाएं। नैस्डैक में 120 टिक्स। मैं कोई भी ट्रेड लेता हूँ ना नैस्डैक का, तो 120 टिक्स से एक एरिया है। जी अभी एरिया आया था कि 933 वाला हिट हुआ, जी आपने 936 था, मैंने वहां पर स्टॉप लॉस मेरा लगा हुआ था 15 पॉइंट का प्रॉफिट, 60 का प्रॉफिट, 120 का स्टॉप लॉस। 120 का स्टॉप लॉस और प्रॉफिट 60। 60 15 पॉइंट चाहिए मुझे, that's it। 60। ये नैस्डैक की बात ये है। नैस्डैक है, ईएस में सर हम लगा रहे हैं मुझे 2 पॉइंट चाहिए, 8 टिक्स प्रॉफिट, 8 टिक्स स्टॉप लॉस, that's it। और 8 टिक्स प्रॉफिट, 8 टिक्स, 8 टिक्स का स्टॉप लॉस। यस यस, गोल्ड में क्या आपके गोल्ड वो लेते हैं, गोल्ड मेरा ख्याल है अगर 8 टिक्स लेंगे तो 80 सेंट बनेंगे, 8 टिक्स। 8 टिक्स गोल्ड में? लेकिन याद रखें अपर एरिया से लेने हैं, जो भी स्टॉप लॉस है वो शायद 8 टिक्स ना बने आपका 8, वो फिर आपको रात को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब कल रात की प्राइस देखें क्या आई थी, इवनिंग एरियाज कल रात के पता क्या आए थे, 120 से 130 ईएस के। ईएस का था सर 120 से 130। अब वो 120 से मुड़ जाए 121 से 22 से 23 से, तो अब आप कहां तक लॉस रखेंगे? मैं 135 पे निकलूंगा कि भाई ठीक है। सर ये जो कल रात का ईएस का एरिया था जिसपे मैंने आपके बारे में बताया 6,000, इज इट करेक्ट? 6000 कहां से ले रहे हैं आप? कल रात वेंसडे के एरियाज हैं, एक्सपेक्टेड हाई के 6, वो तो 6000 बाय में रखा है। ठीक है ठीक है ठीक है, अब मैं लॉन्ग शॉर्ट पढ़ रहा हूँ। आज ऊपर से अब 6000 बाय में रखा, ठीक है, फिर वहां से 4 पॉइंट 5 पॉइंट नीचे रख लें कि अगर 5995 पे चली गई तो मैं निकल जाऊंगा। मैंने सर इस पे जो आपसे कंफर्म हाँ, किया हाँ। मैंने एटीएम लगाया है इसके ठीक ऊपर, है। बाय के ऊपर स्टॉप लॉस मैंने लगाया 12 टिक्स ठीक है, 3 पॉइंट्स आपने रखे हैं, और टेक प्रॉफिट लगाया 20 टिक्स। भी ठीक है, ये भी सही है, दिस इज फाइन। भी fine। और जिस तरह जो इसी का जब एमईएस में मैं गया हाँ। इसे लगाने के लिए, तो जो जहां मैंने सेल किया था 6130, वो बिल्कुल सही है, 100% ठीक है, सेल इस पे किया। एटीएम मैंने लगाया सर वही 10 क्वांटिटीज, ठीक है, 10 क्वांटिटीज डाली एक पूरा लॉट हो गया, जी। और एसएल मैंने लगाया 12 टिक्स का, बिल्कुल सही, एक प्रॉफिट लगाया 20 टिक्स 100% सही, 105। नो प्रॉब्लम। अब लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज देखिएगा, कंप्यूटर ने क्या कहा है, कंप्यूटर कह रहा है कि शायद प्राइस मुड़ जाए 620 से, एक 2 नंबर दिए ना आपको, अब नीचे 10 भी लिखा हुआ है, अब वो 10 से चली जाए वापस 11 से, ये किस्मत में होता है कि वो कहां से। you're fine सेम प्रोसीजर आई विल पुट on exactly। अब हुआ ये उस दिन गोल्ड 53 से मुड़ गया, तो हमारा वो एरिया जो ऊपर वाला था वो हिट नहीं हुआ, इट्स फाइन, तो आप लेकिन आप ठीक कर रहे हैं। मेरी एटीएम लगाने का यस यस, जैसे एक एटीएम मैंने लगाई ईएस में, जैसे आपने कहा उसका बेबी वर्जन में जाके लगाया एमईएस में, यस, दूसरी एटीएम ऐसे होता है। करेक्ट। तो आपने एक एमजीसी होगा, एक जीसी होगा, या इसी तरह एक ईएस और एक एमईएस, एक एमईएस में लगाया 10 टिक्स के साथ, क्वांटिटी 10 क्वांटिटी 10 क्वांटिटी, एक ही हो गया ना।
हाँ, वो मैं रात की एटीएम बता रहा अभी हूँ। हम अभी बात करें थे वापस वैसे, हाँ जी अगर रात को हमें गोल्ड के एरिया लगाना है जी उसकी एटीएम क्या बननी चाहिए? बताएं गोल्ड की बात कर रहे हैं गोल्ड की हमें आप माइक्रो में एक जीसी में एक एमजीसी में एटीएम एटीएम लगा दो जी आप जीसी 25 टिक्स 25 टिक्स का स्टॉप लॉस। क्यों सर मैं 250 हो गया ना नहीं ये 30 कर दो नहीं, मैं एरिया से कह रहा हूँ। एरिया से मैं इनको सिर्फ 25 टिक्स बिल्कुल सही है, $2.40। 25 टिक्स का स्टॉप लॉस हाँ और टीपी कितने बनाना? टीपी 0 रखो जी फिर खुद ही निकालो क्यों सर नहीं, ये रात को सोने वाली बात कर रहे हैं। सोने वाली बात कर रहे हो फिर हाँ। $1 पर रखो ना उसको 10 टिक में 10 टिक्स एटलीस्ट $1 तो है ना इसी तरह एमजीसी पे भी सेम प्रोसेस। एमजीसी पे फिर ज्यादा करें ना वो क्या बताएंगे स्टॉप लॉस? एमजीसी 1 के साथ करेंगे या 2 के साथ नहीं, वो जीसी फुल कर रहे हैं, एमजीसी 10 के साथ कर रहे हैं, तो वो पूरा लॉट लगा रहे हैं ना। वो सही एक ही गल होगी ना तो एमजीसी ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੀ ਨਾ एपेक्स ਦੇ हाँ जी, ये एक में नहीं बनता ना हेलो। मैंने सर अच्छा। ये देखा ना जीसी मैंने लगाया 25 टिक्स का स्टॉप लॉस। सॉरी, टेक प्रॉफिट गिव मी 10 मिनट्स। अब मैं आपको शाम को बताता हूँ। ओके, नो इसमें वही करो 20 टिक्स का 25 टिक्स का स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट 10 टिक्स। लेकिन गोल्ड का सबसे जो बेहतर टाइम है ना वो 5 बजे सुबह जी 5 से 8:30 9 बजे तक का टाइम बहुत अच्छा है। इसको देखिए सबसे पहले इसको रीड करें स्टडी करें अपने चार्ट्स को ना इसके नंबर ऑफ डेज बढ़ा के ना आप देखिए कौन सी टाइमिंग उसकी है तो गोल्ड में फिर आप गोल्ड के लिए पूरा आपको इसको रिसर्च करना पड़ेगा। हाँ जी डिटेल में जाएं अगर आपने इसी को जैसे होल्ड करनी है ट्रेड इस जी रात को तो देखिए क्या टाइमिंग है जिस टाइम पे इसमें बैक टेस्ट करनी होती है ना, बैक टेस्टिंग। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। ये स्पेशल ये मिडबैंड बनते हैं ना सर मिडबैंड कैसे बनेगा? लोअर हाई से आ रही है। नहीं सर, हाय हाय सर एक सेकंड, मैं यस सॉरी, एक सेकंड 1 मिनट, मैं गलत चार्ट देख रहा हूँ। एक सेकंड में जस्ट या अब हायर हाई से आ रही है, दोनों ग्रीन है। सो तो मेरी प्रॉब्लम आ रहा है ना कि पेशेंस नहीं हो पा रहा। जैसे अब अभी ये ऑर्डर पिक होगा, ठीक है, ये आपने बोला होगा कि प्लस माइनस 8.5 का स्टॉप लॉस होना चाहिए 6108.25 से माइनस। नहीं, अभी तो वो तो नीचे से लोअर लो था ही नहीं, आपका सेल नहीं है, वहां से 610675 माइनस 8.5। 6108.25 ईएस की बात कर रहा हूँ। एक सेकंड जी, why my charts are messed up. Yes, minus 8.5. Correct. 08.25 माइनस 8.5 से स्टॉप लॉस होने लगेगा। Correct. लेकिन मैं उसमें बैठ नहीं पाता। यार अब मैं इसका तो कुछ नहीं कर सकता सर, मैं ये तो एक मैथ है ना, आपको बताया गया है कि वो देखें, आपको बैठना पड़ेगा ट्रेड के अंदर, फिर आप एरिया टू एरिया करें, फिर मिडबैंड छोड़ दें, अगर वो फिर वेट करें जब तक एरिया। मैं आपके सामने था, मैं आपको पहले अगर सिर्फ और सिर्फ 9:30 से टाइम देख लें कि कौन सा एरिया पहले टच हुआ, फिर दूसरा टच हुआ, फिर तीसरा। मिडबैंड तो आज काम नहीं। सर एवरी डे 70% की मिडबैंड की रेशियो है यार, एक आध निकल गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा प्लान होता है कि 50 आधा दिन निकल जाए। बस ठीक है, फिर पूरे दिन में 50 ही टारगेट रखें, एक निकल गया और फिर ना ट्रेड डालें ना, तो क्योंकि जो 50 तो एक दो तो 50 वाले लिए, एक 300 वापस कर दिया,
ये प्रॉब्लम है ना। तो जो एक अच्छा जो 930 पे ट्रेड खुला था वो $250 का था, मिड बैंड वाला, राइट। उसके बाद एरिया का इतना प्यारा ट्रेड आया कि एरिया में मैंने सारा एरिया से बनाया आज। एक मिड बैंड लिया था ऊपर जाते हुए, लेकिन मेजोरिटी अभी भी मैं वेट कर रहा हूँ कि किसी दोबारा किसी नंबर पे जाए तो 22,000 से कितना ऊपर गई है ये, 22,000 और 57 तक गई है। अब 80 पे जाए तो देखूं 22,080। आप इसकी बात कर रहे हैं? मैं कर रहा हूँ जी नैस्डैक की बात। अब देखें ये मिड बैंड पे आ रही है, ठीक है, मैं यहाँ से लॉन्ग लगाने लगा। हो गया, टाइम खत्म हो गया। मैं किसी ईए को पकड़ूंगा और यहाँ से कुछ डाल दूंगा ट्रेड में। हाँ जी, तो यहीं से बनता है सब कुछ, ठीक है। तो मेरा मैथ क्या कह रहा है, मैं मेरा ट्रेड लगा है 610325। ये ई है मेरा, पी ए नहीं है, कुछ नहीं वरी, ग्रीन है ना दोनों। तो मैं बाय करने जा रहा हूँ। प्राइस कहाँ से आ रही है, हायर हाई से आ रही है। मैं स्लाइटली नीचे ले आया हूँ, 6103 पे ले आया हूँ। मेरी एंट्री 6103 पे है इस वक्त, ताकि एरिया के बिल्कुल टॉप पे है। इधर नैस्डैक का क्या हाल है, नैस्डैक का भी जानी है जी ऊपर। टच तो हुआ है, मैं नहीं टच हुआ अभी। हो गया जी। अब यहाँ पर मुझे अगर मेरे अगेंस्ट चली गई 9 तो मैं निकल जाऊंगा, ये मेरा रूल है। या यहाँ से $100 आ गया तो निकल गया। देखिए एक टिक तो आ गया मुझे, तो ग्रीन है ना, तो बाय में रहूंगा, अल्लाह से इधर नैस्डैक पलट जाए। आ गया जी एक पॉइंट, ठीक है, बेशक आ गया, बस ये काम था और क्या था। अब मेरा ट्रेड होगा 112 पे जाके वो 0 लॉक करेगा, या अगर आपने नीचे 0 अब लॉक करना है, लेकिन आपने 50 ले लिए हैं, अब आप ये कर रहे हैं 100, बस 50 आ गया, डन कर दो। नहीं, प्रॉब्लम ये नहीं, आपको हौसला रखना है -200 का, क्योंकि क्या पता ये ट्रेड 300 का हो। ये होता उस वक्त जब आपकी ट्रेड निकल जाती है, ओ माय गॉड, मैं तो सिर्फ $50 लेके, ये देखिए आपके सामने मैं बैठा हूँ, ट्रेड में बैठा हूँ ना, वो बिल्कुल $62 हो गए ना। मैं आप 50 पे निकले, मैं 62 पे निकला हूँ, अकाउंट रियल लगा हुआ है ना। तो मुझे अपने लॉस का पता है कि यार कलर चेंज होगा, देखेंगे उस वक्त, अभी तो देखें क्या पता ये चली जाए, लेकिन एटलीस्ट 2 पॉइंट तो देके जाए यार। इट्स पैनिक इतनी जल्दी नहीं होना यार। चलो आपने 1 पॉइंट लिया ना, ठीक है, लेकिन आपने कोई गलत नहीं किया। मेरे अगेंस्ट अभी भी जा सकती है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से मैं 100% जाऊंगा। पैशंस की गेम है ये सारी, आपको फियर नहीं होना, फियर तो नहीं होना। अब आपका 50 पॉजिटिव हो सकता है, मेरा फिर भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, लेकिन मैं बैठा हूँ 9 तक, देखेंगे उस वक्त। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आ रहा है ना। अच्छा, मुझे टू बी ऑनेस्ट विद यू, ये मतलब क्यों हुआ, पहले मैं ऐसे नहीं करता। ओके, पहले मैं 1.5 तक ही बैठता, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ से ये करता हूँ, हाँ हाँ, यहाँ आपका वो खुल जाता है, वो ठीक है, खुल जाता है। यहाँ से फटाफट इस पे जाता हूँ, उसको 610 से माइनस किया, जो आया उसमें मिला। बिल्कुल सही। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ कि व्हाई आई गॉट दिस। सब लोग कहते हैं कि यार अकाउंट ब्लो हो रहे हैं, एमईएस पे खेलो, ठीक है। ठीक है। और दूसरा, जहाँ 50 देखा निकल गया। अब ये उनका थ्योरी है, मेरी डिफरेंट है। अब देखिए मेरा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, आपने 50 लिए थे ना, मेरा हिट होगा। हाँ, क्योंकि मैं नहीं 8.5, मैं 9 तक हूँ। अच्छा, क्योंकि जब तक मेरी कैंडल नहीं बनती 8.5, 8.75 अभी तक नहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ।
बैकग्राउंड चेंज हो गया। बेशक हुआ है, लेकिन मैंने बैठा हूँ ना अभी, मैं अभी बैठा हूँ ट्रेड के अंदर, कि मैं पूरी कंफर्मेशन लेता हूँ कि 8.75 भी ठीक है, 9 के बाद तो नहीं मैं बैठ रहा हूँ, और 9 तक बैठ सकते हैं। 8.5 से 9 के दरमियान तक ठीक है। अब मैं निकल गया, डन, ट्रेड बंद हो गया मेरा। आपने 50 लिए, मैंने -200 दिए, ठीक है ना। तो मुझे भी कोई डर नहीं है, क्योंकि मुझे अपना पता था कि यहाँ से 50, मुझे अपने रिस्क का पता है कि मैंने रिस्क जितना लिया, आपको अपने रिस्क का पता है। तो अब ये जो रॉन्ग फीलिंग होती है ब्रेन में, ये भी इफेक्ट करती है। सर ये देखें, आपने एक पर्टिकुलर उससे एक डिसिप्लिन से चलना है कि मैंने कौन सा ट्रेड लेना है, एटीएम से लेना है, नॉन एटीएम से। अगेन मुझे नहीं समझ आया कि आप लोग गोल्ड में कैसे स्विच हो गए यहाँ पर पूरा ईएस करते करते, नहीं होना चाहिए। क्योंकि गोल्ड वैसे की मैंने- मेथड ही डिफरेंट है कंप्लीटली। गोल्ड आज गोल्ड का आखिर है। नहीं, गोल्ड करें, बहुत अच्छा चलता है। 30-20 का रूल है गोल्ड का, कि मार्केट नहीं दबानी, 30-20 ग्रीन हो, गोल्ड में बैठ जाए। ट्रम्प स्पीच इज कमिंग, Nasdaq is dropping big time। अब यहाँ पे सर हम लोग लेंगे, अब सेल करेंगे सेल कर 6-1। अब मैंने वहां लॉस लिया ना 200 का, क्या पता मेरे अगले ट्रेड में निकल जाए सारा ही पूरा हो जाए। सर सेल बन रहा है हमारा 6101.25। सिर्फ एक चीज अगेंस्ट मेरी पता क्या गई है, मेरे पास टाइम, मैंने 1 बजे ट्रेड डाला है, जो हमारे 9 से 11 के बाहर चलता है यार, तो यहाँ पर तो टाइम नहीं है मेरे साथ। R1 तोड़ गई है, लेट्स सी व्हिच वे ट्रम्प वांट्स टू। ट्रम्प एवरी डे सीपीआई में भी बोली जा रहा है, पीपीआई में क्या कर रहा है यार ये बंदा। This guy has too much. अब मैंने सर सेल लगाया 6101.50। इज इट करेक्ट? यस में Didn't touch my mid band। एक टिक से रह गया मैं, ये एक 2 टिक से मैं 6101 पे बैठा हुआ था, नो प्रॉब्लम। वेट कर सकते हैं मे बी। हाँ देखता हूँ, वेट करता हूँ। स्पीच कब है उसकी? That will mess up everything। Pending 30-year bond auction is pending, so 1 p.m. we're gonna have some news। This is nonsense। Let's see if he takes the market up from here or down from here। फिर दोबारा नहीं पिक हुआ मेरा ऑर्डर, मैं एक टिक से रह गया।
वरना मैंने अभी लगाया था 6101 ठीक। नहीं और सर जी बस सर ठीक है। दुआएं सर जी। No, it's consolidation, up, down, up, down, up, down. This is, again, 30-20 mid-band is so messed up. Green, magenta, magenta, so it's, जब हम ये बना रहे हैं हाँ तो उसमें हमें ये में तो ईएस करना है, 30 डे में फिनिश करना है। मुझे सिर्फ ये बताएं, ये में रोज के 50 नहीं बन सकते या 100? तो फिर मसला क्या है? अगर आप कह रहे हैं मैं 1 पॉइंट ही ले रहा हूँ तो आप 15 दिनों में 1500 बना लेंगे। तो आप असल में वो थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग होने वाली है ट्रेडिंग की साइकोलॉजी में। आई यू नो दैट्स आज आपके वीडियो देखेंगे इंशाल्लाह हमको ना वो साइकोलॉजी वाली है दैट विल हेल्प सिम में कर 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 करके एक चीज मास्टर कर लें, एक चीज बस, दैट्स इट। शाम को मैं सुनने बैठा हूँ अरे शाम को मार्केट बिल्कुल डेड होती है डेड हो जाती है। तो लेकिन प्लेबैक कर लिया करें, डे की मार्केट प्लेबैक कर लिया करें देखने के लिए। I'm almost there, honestly. mentally मैं सिंक्रोनाइज हो चुका हूँ इन चीज़ों के साथ टाइम लगता हो जाता है। लेकिन वो अब किसी का राइट स्ट्रेटजी के साथ चलना मेरे को अब वो जो यहाँ पर लेडी बैठी थी उन्होंने आज 2 एरिया लिए हैं, कह रही है डन फॉर द डे। लेकिन वो जो आपके सामने एरियाज जिनको हमने एरियाज दिए ही नहीं थे एक हफ्ता, उनका मेरे मैसेज आया हुआ था कि आई एम डन माई। जो जैज बैठते हैं हम यहाँ पे बैठे वो कह रही है मैंने 61 लिया और अगला एरिया ऑल ईएस एरिया फॉर मी डन। This is consolidation. One candle up, one down. We have no idea which way it's going to go. The candle is messed up. कल से गोल को टच नहीं करना आज मैंने 2 एरिया से गोल में फंस ये आपके लिए एनालिसिस तो मैं कर रहा हूँ ना, तो सिर्फ आज प्ले बैक करें और एरियाज देखें कि पहला एरिया कब टच हुआ। मैं आपको एग्जैक्टली बता देता हूँ। ईएस में हमारा पहला एरिया टच हो गया था एग्जैक्टली 1022 पे। गिव मी 1 सेकेंड, रिफ्रेश। सर 1032 से की कैंडल में आपका पहला R1 हो गया था डन। इज इट कमिंग फ्रॉम द बॉटम? R1 ठीक है। एग्जैक्टली एट 1055 पे R2 भी डन हो गया था। ये 2 एरिया और जो उसने प्राइस दी, अगर आपने 10 से भी लिया होता 11 12 13 ऑल 14 तक नहीं गई, अगर कोई 10 से एंटर किया है तो उसने लिए हैं 5 पॉइंट, किसी ने 12 से लिए हैं 6 पॉइंट। वो दोबारा उसने एरिया टच किया, डाइवर्जेंस बनाई and shot to the downside. Yes, you are testing ...
13 इधर देख सकते हो आप, इधर देख सकते हो 13 0 followers, 0 followers. तो दोनों एरिया ES के R1 और R2 100% मैं कहता हूं कि अगर सिर्फ कुछ ना करते, हम बैठे हुए थे, पहला तो मिड बैंड, जब छोड़ दें यार, मैंने मिड बैंड नहीं करना, ओवरबॉट, पहला एरिया हमारे कंप्यूटर ने प्रेडिक्ट किया कि यार 6100 से 6103 से बाउंस होगी। वो पता कहाँ नीचे तक गई? अगर पहला एरिया आपको नीचे तक लेके गया 6095 तक, 5 पॉइंट मिले आपको, 5 पॉइंट सिर्फ R1 से मिले, R2 से 5 पॉइंट मिले। ये 5 और 5 ये $500 का ट्रेड था, छोड़ो यार 500, दो ट्रेड, दो 300 आ जाए, 200 आ जाए, आपका पास हो जाता है। आप हो ही रहा है, एरिया नहीं आ रहा, आप गोल्ड में चले गए, गोल्ड नहीं हुआ मिड बैंड में चले गए, मिड बैंड नहीं हुआ डाइवर्जन देख ली, डाइवर्जन देखी 60 मिनट पे चले गए, 60 देखे, ओ लो जी एरिया मिस हो गया। तो आप ऐसे करते रहेंगे, कुछ भी नहीं खा पाएंगे। क्योंकि बफे है ना, मैं हमेशा बफे में जाके जहाँ भूख लगी होती है वो खाना खाता हूँ, बेशक बफे हो, क्योंकि आप सारा कुछ कहते हो, बंदा कहता है कुछ भी नहीं सही तरीके से खाया यार। तो over analysis is paralysis, 100%. How to attend your live classes, Matheson? You have to sign up for the same thing, and pay you have to buy the software for $7,000, and then after 3 months you have to pay $150 a month. So ऑनलाइन बैठते हैं। हाँ जी, I'm not feeling well, feeling sick। हाँ, आज 90% ऑनलाइन है, जी, तो वो हम जाएंगे वहाँ पर जो है सुपर एरिया। So by the way, online and offline, this is, मैं एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, there's no difference you get into sitting in front of me like versus sitting at home, it's identical। हाँ जाएं, लॉग इन करें सुपर एरियाज पे, लॉग इन करें, वो जाएं, नीचे राइट अवे लिखा हुआ है, हाँ नीचे जाएं, नीचे जाएं, नहीं 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 नहीं, आपके पास लाइव स्ट्रीम उन्होंने दी हुई है, ऊपर जाएं थोड़ा, यहाँ लिखा ना चाहिए लाइव स्ट्रीम, गो अप गो अप गो अप, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, ऊपर जाएं, एरिया, ये लिखा हुआ है लाइव, हाँ क्लिक करें, देखिए लाइव बोल रहा हूँ आपके, दैट्स इट। और आपने मुझसे बात करनी है तो व्हाट्सएप मैसेज करें। Yeah, more confidence. I have users sitting in UAE, Australia. They don't spend that much and they're making a killing. सर पूरी दुनिया में मेरे पास ज्यादा स्टूडेंट UAE, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, क्योंकि वो तो आ नहीं सकते, वो तो बल्कि इतने सस्ता देते हैं, तो देते भी हमें पूरी पैसे नहीं है, क्योंकि वो कहते हैं ऑफिस में नहीं आना, तो हम तो लाइसेंस को सेल लीज करते हैं। So go to the Matheson Trinity office. It's free. It's included in your subscription. Trinity office है 1575 Trinity। देखिए वो फ्री, ये भी तो फ्री, आपने सॉफ्टवेयर बाई किया है तो आपको साथ ये मिलता है, जो लीज करते हैं उनको वो दे देते हैं, आप जाके मुर्ताज के साथ लाइव ट्रेड कर लें, वो आपको करा देता है। इतने ज्यादा ऑप्शंस हैं, 3, हाँ वो आ जाता है इसमें, बिल्कुल, या यहाँ पर आ जाता है, लाइव आता है। सर ये जितने आज बैठे हैं, आपको सिखा दी चीज, मैं अब मेरे सामने बैठना ये मकसद नहीं है। अब देखिए आज मैंने सारा इक्विपमेंट घर लेके जाना है, इसकी कॉपी बनानी है। रीजन ये है कि अगर मैं ना आ सकता, स्नो बहुत ज्यादा होती, तो डैनियल की ब्रीफ मिस होनी थी और आप लोगों को ब्रीफ भी तो देनी है, तो मैं ब्रिज कर सकता हूँ, तो डैनियल में ब्रिज करूंगा उनके पे, वहां से फीड जाएगी ऑरेंजविल, फिर पूरी दुनिया में चली जाएगी, राइट। सो आई हैव टू मेक श्योर कि अगर मैं घर में भी बैठा तो आपको ब्रीफ तो दे रहा हूँ ना। You can come and sit at the Trinity office. It's the same concept, guys. You don't need to really come and see me in person. It's not any difference.
Alright, so much consolidation happening on. देखें वो large small triggers messed up हुए हैं. Like one candle up, one candle down, one. So stay away from the market right now. यूएस में तो बिल्कुल ही बस लेकिन अगर भी कुछ भी करना है सेल में रहें, दोनों चार्ट सेल हैं. और अगर सेल कहाँ से सेल किया हुआ है? मैंने सेल लगाया था 6099 पे ही है मेरा। थोड़ा अर्ली कर लिया. 6100 नंबर था. ट्रम्पो कुछ बोलोगे? $80 minus 162. So जरा मैं 6.00 पे लगाया। या ये यहाँ कलर चेंज हो गया तो निकल जाएगा. ये अब आपके रियल अकाउंट में नहीं होना चाहिए, सिम में करें, क्योंकि इस वक्त कोई टाइम नहीं है ट्रेड करने का और कंसोलिडेशन में कोई कैंडल की स्मूथ बन ही नहीं रही. वो देखें अब यहाँ से वो निकलना शुरू कर रहा है. या बोला है कुछ नहीं अभी तक. इधर नैस्डैक घूम रही है और वन के ऊपर. नहीं मंसूबा नहीं करते, क्योंकि it was so much a disaster because people got random trades at different prices. So he's like, man, it's so much bug. नहीं no. सर ये आज मैं अगर क्या के एरिया करवा रहा हूँ तो Yeah, this is kind of nonsense. We are sitting beside you and not. This is shame. मुझे सिर्फ मॉर्निंग में ना उनसे ये सुनना होता है कि आज की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी. बस मुझे एक वर्ड चाहिए होता है, हाई टू गो लो. मुझे सिर्फ ये लो टू गो हाई चाहिए या हाई टू गो लो, बस. और मुझे कुछ नहीं चाहिए. हेलो अस्सलाम. नहीं वो तो देनी नहीं है. ठीक है. नहीं एनी डेस्क तो सोलो ही रहेगा, वो तो है. लेकिन कंकरेंट कनेक्शंस ऐड करना है ताकि दो लोग यूज कर सकें. नहीं उसको एनी डेस्क चाहिए लाइसेंस प्लेट. नहीं फिर ये एक और सोलो ले ले अपने लिए और अपने हमें बिल कर दे, वो ज्यादा आसान है. ये नहीं पता, ये नहीं मुझे पता कि मल्टी फिर कंकरेंट में दो. ठीक है कंकरेंट ऐड करें और ना हुआ 1 मंथ के लिए फिर हम कैंसिल कर देंगे. जस्ट मेक श्योर दैट वी नीड जूम फॉर हिम. मैन 1 हफ्ता हो गया. ठीक है, बस सिर्फ और सिर्फ वो कॉर्पोरेट लैपटॉप आ जाए. ठीक, नो प्रॉब्लम. ओके जी. Last question. हाँ जी सर, जितने मर्जी पूछे ना. अब देखें प्रॉफिट बन गया. सेल में थे 6100 से था, बन गए $200. ठीक है, डन. तो ट्रेंड नीचे है तो सेल में रहे, कलर चेंज हो तो निकल जाए. लो मींस के सेल में रहेंगे. कहां से? हाई से, एक्सपेक्टेड हाई से, R2 से. लो टू गो हाई से कहां से? S2 से, एक्सपेक्टेड. ये मेरे पास सिर्फ ये क्लूज चाहिए होते हैं मुझे. ये है एक हाई टू गो लो मीन R2 से, R2 प्लस से, R2 प्लस मीनिंग R2, R3, R4 हाई टू गो लो. लो टू गो हाई S1 S2 से, S2 और एक्सपेक्टेड लो या एक्सट्रीम लो. तो सुबह मॉर्निंग में ही सिर्फ ब्रीफ मुझे मिल जाती है कि आज हमारा क्या प्लान था, और उन्होंने बकायदा पैसिफिक से पता क्या R2 में रहिएगा.
ठीक है, अब हर बंदा R2 से जिसने बेचा निकल गए ना सारे R2। और पोजीशन ट्रेडर वाले देखें कहाँ बैठे थे, जिन्होंने पोजीशन अभी तक अगर होल्ड भी की हुई है 100, लेट्स से अगर आपने R2 लिया होता 110 पे, यू गॉट ओवर बॉट बाय, एक सेकंड में दे देता हूँ सर, 98 तक। सो 110 से 6111 माइनस 6098, 13 पॉइंट बने जो पोजीशन ट्रेडर्स थे। तो क्योंकि पोजीशन ट्रेडर को ये नहीं दिखता, वो आपको इसमें हौसला नहीं मिलता, पोजीशन ट्रेडर माइनस 10-10 हजार देख लेता है, क्योंकि बल्कि मैं कहाँ पहुंचा हूँ, मेरी पोजीशन खुली हुई है। लेट मी सी, अब मैं आपको बताता हूँ, ट्रेड भूले होते हैं, सी ट्रेडर में लॉग इन करते हैं, याद ही नहीं मेरी पोजीशन खुली उधर। FTM मैं सेल में हूँ, हाई टू गो मैंने बेच दिया था। सी ट्रेडर देखते हैं अब वहाँ क्या बना हुआ है। पोजीशन ट्रेडर एरिया टू एरिया करता है। कितना बना है सर, प्राइस बताएं, कितने बने हुए मेरे? $4360। ठीक है, एक अकाउंट में। वेट करें, इसको बंद करें, थोड़ा सा भूल ही गया था, पोजीशन खुली है। ये रात को ली थी ये नहीं, आज सुबह एरिया से। ये देखें दूसरी पोजीशन, दूसरे अकाउंट में कितना बना हुआ है जी? 4125। ठीक है, तो मैं पोजीशन ट्रेडर, लेकिन अकाउंट में पैसे भी उस हिसाब से होने चाहिए। ठीक है, 4200 बन है सर, 2 मिनट्स के साथ, 2 मिनट्स के साथ। हाँ, 4500 ले लिया, एक ट्रेड डाला है पूरे दिन का। मैं आपको हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हिस्ट्री में गए। ठीक है, ये आज का ट्रेड है, एक ट्रेड है ना, यहां से सेल किया था 50 लॉट के साथ। ठीक है, तो 2.5 मिनी बना ना, 2 और 1 आधा, 2.5 मिनी से कितने पॉइंट लिए? $4400 लेके आया हूं बाहर। मैंने इसको बैठना था, और अभी तो और गिर रही है जरा वॉलेटिलिटी। चलो ठीक है, अब मुझे इसमें बैठना पता कब चाहिए, तक चाहिए था 5110 तक। अब मैं फिर देखता हूँ कि अगला एरिया क्या आता है। वो देखें कितनी स्पीड से मिड बैंड चल के नीचे आया है। ओह, पोजीशन ट्रेडर से याद आया, पैसे बने हुए okay, और आपके सामने क्लोज किया वो। ये क्लोज 5 दिन आना होता, ये 10,000 बने होने थे। आप एरिया से कर लें, FTMO हो, नैस्डैक हो, रसल हो, गोल्ड हो। अब ये FTMO को एक सिंगल ट्रेड 5,000 देके गया है। ठीक है, लेकिन मैंने वेट किया ना, जब तक वो एक्सट्रीम पे नहीं गए, R2 पे मैंने नहीं बेचा। और मैंने फिर जो होते हैं ना पोजीशन ट्रेडर्स, वो जल्दी जल्दी नहीं निकल जाते। और क्योंकि ऑफ कोर्स पहले उसने शायद मुझे -1000 दिखाया हो, लेकिन बफर है तो इट्स ओके। पता क्या करें, मिड बैंड पे जाके ना ATM लगा के वाक पे निकल जा करें, क्योंकि आपके इमोशंस आ रहे हैं ना उसके अंदर, इमोशंस आ रहे हैं। अब मैं बार बार बैठा हूँ यार, पता नहीं 50 बन गए, 100 बन गए, प्लस माइनस नहीं, ATM लगा के एरिया पे लगा दें, कहीं आपको एंजाइटी ना हो उसको देख देख के। अब देखें, 2.5 मिनी का मतलब होता है कि कितना, $50 का एक, राइट। अगर इसने 4300 का मुझे प्रॉफिट दिया है, डिवाइडेड बाय 50, 86 पॉइंट्स लिए हैं मैंने R2 से, 86 पॉइंट नैस्डैक में। और नहीं, मैं अभी कहाँ लूंगा पता क्या, फिर ये जाएगी ऊपर। अब मैं 22,100 पे जाऊंगा, फिर वहां से सेल करेंगे। अब ना होता ही है कि इमोशंस आ रहे हैं। ऑनेस्टली इट हैज नथिंग टू डू विद सॉफ्टवेयर, इमोशंस। लेकिन वो एग्जैक्ट मेरे वो इमोशन हो गया। इसने जाना है एक्सट्रीम लो पे। इस नैस्डैक का इस वक्त जो हाल हुआ ना, इसको पता कहाँ जाना चाहिए? मेरे हिसाब से इसको जाना चाहिए 21,360 तक। मेरा ये गोल था कि जब जब 60 मिनट के बैंड से बाहर है ना, मैं बेच रहा हूँ। क्योंकि अब आप कहेंगे यार इसने पोजीशन ट्रेडिंग कैसे ली, पता क्या, 60 मिनट है चार्ट है,
बैंड से बाहर चली गई ना, जी जी तो मैंने बेच दी और मैंने निकलना कहा था मिड बैंड तक, वो तो 820 तक मैं इसमें बैठ सकता था। तो आप साथ ही 60 मिनट का चार्ट 60 मिनट का चार्ट बहुत पावरफुल चार्ट है। That even sitting in front of us will not fix it, guys. You guys gotta play longer trades. Longer positive, shorter negative, meaning quick in and out. और अब आपको मैंने पोजीशन ट्रेडिंग भी दिखा दी कि ये जो पोजीशन ट्रेडिंग बैंड टू बैंड चलती है और उसमें आपको कोई रश नहीं है। अब ये फिर बैंड से बाहर जाएगी, फिर बेचेंगे। सिर्फ मेरा अगला नंबर है S1 नैस्डैक के लिए, लेकिन नैस्डैक इसको ब्रेक करती है कि नहीं। 6098 वो कोई पॉजिटिव वर्ड कह रहा है मार्केट चढ़ जाती है, कोई नेगेटिव कह रहा है तो guys, then you should go and sit at the Trinity office, please. Murtaz will help you. What time is it? 4:37. I'll call it a day. Yes, Murtaz is there every day, Monday to Friday. And he does the live ES trading for you guys, and minimum 100 to 9 a.m. to 2 p.m. every day. It's included in your subscription, guys. वो बड़ा प्यारा रिजेक्शन विक आई थी, रिट्रेसमेंट। फर्स्ट हायर हाई से आ रही थी, फिर R1 में घुस गई है। We'll take a trade at how to join live ES trading. Murtaz will have if Nasdaq goes to same around 61.14. So let's do the math here. 21,950 minus 22,000. So 50 divided by 7. So almost 7 to 8 points. So at this speed, R2. Right now, they're completely out of sync, ES and Nasdaq. ES का मिड बैंड आ रहा है सर 6095। Where's that option? It will be coming for ES on. If you log into Super ES, you will see it's called Trinity Drive Murtaz Zoom soon. 9 high. It's almost at 9. These guys, I don't read a lot of stuff on TikTok. Please send me WhatsApp. I'll reply there, please. Because I 647-228-0694. Okay.
And I'll give you guys, anybody who's doing FTMO, I'll give you entries for Nasdaq. Just hold long, and I'll give you the exact lot. If you're doing $200,000 FTMO, I'll tell you when to enter it, because I'll enter with you guys, and I'll tell you when to exit, because we'll hold the positions overnight. So yes, FTMO, I'll tell you when, because I'll give you precise Nasdaq entries. And that trade may come once a week, once every 2 days, 3 days, but at least, like today I took FTMO. FTMO is funded companies called CFDs, contract for difference, but you can hold your trade for overnight. And one of the world's best payout companies it's not live, it's a funded company, but there's no better company that I know in the world than FTMO. 2 stages, quick, fast, 4-day pass for EA, 4-day for PA. And they give you payouts, and just amazing how beautiful FTMO is, because you don't have a stress to hold the trade until 5. So you can do position tradings and learn position trading with FTMO. So I'll give you the precise entries when FTMO is coming, and I'll take the entries with you. Like today I took an entry from 22,000, almost there. Yeah, a little higher, 22,050. Where I would be sharing it on my live stream, the FTMO entries. So today I took an FTMO entry again. Just open up 60-minute upper band, and whenever it's outside or close to the band, sell from there, and at least get. And what would be the? So $200,000 will give you $10,000 of daily floating loss. So let's look at worst case scenario. $10,000 divided by how many? $10,000. If I do 150 points, would blow up my account. So maybe with 1 mini, good enough. Who cares about the CFD price? Futures is ahead of everything. Futures is ahead of everything. So yeah, just please post it on WhatsApp. It's easier for me to reply, because this number is read by 4 people, and I'll give you the FTMO. What loss size for 100,000 account? At least if you're doing Nasdaq, no more than what's your threshold at 5,000? So let's do, if it goes against us, 150 times 20, 3,000. No more than 1 mini, so 20. So volume should be 20. Maybe even maybe 10. So keep it 100K account. Yeah, but we'll be trading as least free. It's not a daily trade. Whenever it goes outside of 60-minute bands, because I own a $200,000. I'm in stage number 2, and I'm doing what do you call it? I did 50 lots today, so 2.5 minis. So maybe 25. 25 is reasonable. But so at least our goal would be 100 points. So $2,000 for small and FTMO. It's okay. Just wait for the days. FTMO, there's no stress. You don't have to worry about finishing it. Contract for difference. You can hold it, floating balance. And then if we do get, we just want to make sure we're outside of the, whenever there's news, or we hedge it so we don't lose money. Just lock it in another direction. देखिए सर मुश्किल हो रही है इसको इस वक्त यार 1 तोड़ते हुए 6103 one more time.
एक सेकंड है हाँ जी बिल्कुल दो पूछे। ये देखिए, हमें ये वाला पढ़ना है जो करंट है हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल हाँ जी दिस इज फॉर यस्टरडे ये तो पुराना है सारा। सो दिस इज द यस करंट बार जो चलिए जब हम ब्लू नॉक्स करते हैं अभी जो लेजन कर रहे हैं तो उसमें तो वो जो लिमिट होती है ना ये 100 दिखा कर आपने 50 लिए तो 50 आया हो जाएगी। उसको अगर हमने काउंटर करना हो तो फिर एटीएम एटीएम क्या आपने मैं बुलनॉक्स करता हूँ 3 पॉइंट मैक्सिमम है 3 पॉइंट लिए ये इसमें बाहर आ गया 2 पॉइंट लिए भाई क्योंकि लाइफ ट्रेलिंग थ्रेशोल्ड है। You don't need to worry about the price on the just wherever futures is just sell there it will automatically change direction on CFDs. So it follows the same. Futures is ahead of everything. You don't need to worry about calculating exact price. So future goes down, your CFDs will start to fall as well. All right. Let's see if this midband works. Where would the black candle be formed? 6 to 103.25 plus minus 5 plus 6098.50 will be the black candle. So you can sell from there, sell stop and buy limit. Refund. तो इसमें एग्जाम में भी हम बाय मार्केट शेयर मार्केट कर सकते हैं? नहीं बाय मार्केट तो सिर्फ Nasdaq है. You just can log into super areas from anywhere.
No, sir. खाना खा लेते हैं Don't worry, very soon I'm going to fix the trading view areas. So at least Nasdaq and ES, you can watch it on trading view. Don't worry. It's included in your subscription. I'll get the areas fixed. So I got to push that damn developer, man. These guys are so lazy. Because he got it working and then just have to automate it. So I'll get you the trading view areas ASAP. चला गया जी वापस ले गए जी पूरी वो बोल रहा है या कुछ जो भी कर रहा है it's done. Small crowd, it's different. Large crowd is different. What a huge rejection, Vic. So if anybody wants to short Nasdaq, do it above 22,200 and 22,200 is the number for FTMO. Oh, big up, down, huge. Volatility is crazy right now. I took that mid band and because I needed just $50 on my daily target on my my day number for my next payout number 2 on Legends. So I can mark that day. Today is day number 7. Day number 7, my balance is today 100 and realized PNL is 180.70. Good. $180.70. That would put me how many days? 1, 2, 3, 4, 5, 6 days out of 7. Craziness, man. Market. हो गया जी हंगामा शुरू हो गया up down. All right, 4 more minutes and I'm gonna call today's stream off. Only area to trade, guys, for Nasdaq 22,100 or 140, maybe the 100, 22,100. And for ES, please. Yes, you gotta wait for at least 6123. और उससे पहले कोई एरिया नहीं लेना 6123. That's the number. That's your last week's high.
Last week's high 61.23 for ES, and for Nasdaq we will worry about at 22,100, and then we'll short from there. Let me start packing everything up. Disconnect Apex, disconnect Legends, Perdia, Bullnox, take profit, and Quant Tower all done. C Trader done. Done. Yeah, you can put a limit order, but problem is it's 143. The market is gonna go to maybe till 5 o'clock. So I doubted that it will climb to 22,100 minus what's the price? 21,900. 170 points, so difficult. जी इधर मेरा ही दिक्कत है हाँ, हाँ। ऑर्डर तो है नहीं क्या कहाँ ऑर्डर कहाँ दिखा रहा है? देखिए ये म्यूट हो रहा है आप पोजीशंस में जाएं, पोजीशन में पोजीशन में है, कौन सा अकाउंट चल रहा है? टेक अवे टेक प्रॉफिट नहीं, लेकिन ईएस में किस में चल रहा है आपकी? ये सिम में चल रहा है। और सिम में चल हाँ, रहा है वो सामने सिम लिखा हुआ है सर, वो रियल में नहीं चल रहा, हाँ सिम में चल रहा है। Yeah, you can put a limit there in advance, but then also put a stop loss of 30 points. So 61.23 is your number for yes. And anybody in Toronto area, do visit the Trinity office if you're on subscription model. Give you quite a bit of interesting knowledge. ये mid band क्या प्यारा, लेकिन lower high से आ रहा था, वहाँ पे बहुत volatility आ गई है जी इसकी speech में. Just saying something. Canadian premiers meet with U.S. lawmakers. All right. It's brutal divergence. So the number to watch for me is 21,510. But it has to 22,000. So you're done, sir? हाँ मैं तो कुछ भी नहीं. Last question. हाँ जी, दो पूछे हैं. You see that I have a problem getting into the emotions. ठीक है. ठीक है, आपकी क्या सजेशन है? एरिया का वेट करें, एटीएम लगाएं, और एरिया में अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हिट हो गया, सुबह. लेकिन While playing on the यस में करें यार. आपका एग्जाम तो यस में होना चाहिए. पीए तो मैं माइक्रो करता हूँ सारों में, तो जो एटलीस्ट, वरना तो पास नहीं होगा ना 30 डेज में. लेकिन चीजें मिक्स ना करें यार, 6 चीजें ना ट्राई करें, एक पकड़ लें यार. मैंने सिर्फ वो मिड बैंड ही ले जा रहे हैं बस, और कुछ भी नहीं कर रहे. हाँ, जो आप हुआ, मुझे नहीं समझ आई कि मेरे सामने बैठे आप गोल्ड में क्यों स्विच करके, समझ नहीं आई ना. तो मेरा सिर्फ क्वेश्चन ये था कि क्योंकि मैं आपको लाइव ईएस करवा रहा हूँ, ठीक है, मुर्ताज आपको लाइव करवाता है, हैप्पी आपको लाइव नैस्डैक करवाता है. तो आजकल चले नैस्डैक तेज है, मैं नैस्डैक को भी देख लेता हूँ. तो नहीं, क्योंकि आप ना ग्रैस्प करने की कोशिश करें सारे कॉन्सेप्ट. पहले एक को मास्टर करें, आपका ये निकले, पीए निकले, उसके बाद होगा. मैं आ रहा हूँ सर, मैं आ रहा हूँ, मैं यहाँ. को कहाँ सेल करना है? No, sir, we don't do stop loss in FTMO. We do holding trade and we can hedge our losses, no problem. But ES को 23 पे यार, 23 से पहले नहीं. Because when it's so much out of band and you have 10 grand or 20 grand, you hold your, and then I can hedge to a certain loss, and then. खाना फेस करो
Sorry, the Trinity office is open until 2, not at 3.